density. And PSA doubling time. Then in malignancy, localized. Metastatic, not much of questions have been asked, so but you can expect आई metastatic थिंक gastrointestinal CRPC आया है क्या carcinoma. एक बार? No. At least whatever I've seen, but this is expected because this isn't so much noise now. So metastatic CRPC can be expected actually. What else? Okay, investigation. I think, and this is one thing. Second is radiology associated. So they have made a lot of comments about MPMRA for screening, staging, stratification, and risk-directed management. So MPMRI also in prostate. Then radiopharmaceuticals also for management of all the second line, third line failed metastatic bone mets patient. So with radium, strontium, lutetium, बोन मेट्स तो VNS. इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन ऑफ पैलिएटिव केयर ना, तो आई थिंक उसको ऐसे दे दिया होगा, सी ए प्रोस्टेट विद बोन मेट्स, हाउ यू विल मैनेज. Yeah. So in radiology, we'll emphasize on MPMRA. That's all. So going through the staging. So and from beyond palpable, it becomes T2, and from T2 there is both clinical and pathological T stage, whereas T1 is only confined to clinical. That TURP related prostate, diagnosis is clinical T1A to C, not PT1. So that is one distinction. So clinical has all T1 to T4, whereas pathological will start with PT2. And in T1A, it is A and B are from TURP, where you have less than 5% of tissue resected showing malignancy, and all of it should have grade group 1. That is another addition. Beyond grade group 1, if it is even less than 5 centimeters, it becomes T1B. And more than 5%, is T1B anyway. Biopsy proven from one or both sides but not palpable is T1C. The implication of knowing T1s is because they come under very low risk category where you can just do active surveillance. So there is question on active surveillance that can be expected because in NCCN they have modified certain factors to take into consideration for active surveillance, and even EUA guidelines also has emphasized on active surveillance. So this question we can expect. So what you should know is those in T1 up till T1C, till they are non-palpable, TURP or biopsy proven, they come under very low risk. But there are extra factors also added that we will discuss later. So this category of it can go for active surveillance easily. So what is T2? So T2 is palpable, confined to one half of the side is A, both is other half, but not, it is more than half of one side but not both sides. If it is both sides, it is T2C. So one half of less or one side. So one has A and B, both has C. Less than half is A, more than half of same side is B, both is C. T3 has two things, extraprostatic extension and seminal vesicle. To even add a note on pathological PT3 here, you have to remember three things. One, extraprostatic extension but not fixed. Seminal vesicle involvement is T3B. Even microscopic bladder neck involvement is PT3. Everything else, fixed, adjacent structure, wall, everything other than seminal vesicle is T4. So non-palpable has T1, palpable has T2. Again, they are subdivided into ABC. T3 is extraprostatic extension, but it is not fixed. T4 is fixed with adjacent organ involvement.
Here, the pathological stage, I've told you what is different. Here, microscopic invasion of bladder neck is T3A, and invasion of other structures are T4. Here, regional nodes is N1. M is divided into ABC. A is non-regional, B is for bone, and C is any other site with bone. So more than the staging in prostate, it is the risk stratification that decides your management. So you should know grade grouping depending on the pattern. So they give you 2 scores, say 3 plus 4. In the slide, the 3 means whichever pattern is predominantly or extensively found, that is 3. 4, the second digit is represented by the higher grade histology, irrespective of its percentage found in the specimen, is the second digit. Together, there are 5 grade groups. So, starting from 3 plus 3, that is the lowest, and the Gleason score is Sahana, could you please tell this again? Which is the first one and what is the second one? Sorry, I couldn't hear. Yeah, I'll tell you. So the first digit is the most extensive and most common pattern that is found. That is the first digit. The second digit is irrespective of the percentage, whichever is the highest grade that is found. Even if it is 1%, 2% of the specimen, that is the second group. So, so first is the most common, second is the highest. Highest, yes. This is So the how, most common pattern. So let's say if you have Gleason grade group 3, so most prominent is 4, then the highest should also be 4, right? No, for example, in this slide, there is a mixture of, say, pattern 3, 4, and 5. And predominantly, we'll take 2 scenarios. Predominantly, it was 3. Okay. And there is 4 and 5 also. My Gleason score will be, a pattern first will be 3. Here 4 is also there, 5 is also there. I'm not worried about what percentage they are found. So I'll add 5. For example, we'll take another scenario. अभी तुम देखो नहीं मुझे लग रहा है इट्स वाइस वर्सा सहाना. No. I'll show you. It's in TMC image book only. First is the most common pattern and second one is the higher grade. You want me to go there? I'll show you. नहीं इसलिए नहीं बोल रही हूँ. अगर तुम जो बोल रही हो वैसा होगा तो कभी भी सेकंड नंबर वोंट भी मतलब अगर मोस्ट कॉमन तो मेरे को समझ में आया. चलो मोस्ट कॉमन इज मान लो 3. मोस्ट कॉमन इज 3 देन हाईएस्ट इज 4 इज ओके. पर जब मोस्ट कॉमन 4 होगा तो हाईएस्ट वाला भी तो 4 होगा. वो 3 कैसे होगा? यू आर गेटिंग माई पॉइंट. हाँ, correct. It will be 4 plus 4. हाँ पर 4 plus 3 फिर तो होगा ही नहीं कभी. Okay. See, this is what they say. See, larger area is 4, smaller area is 3, and even smaller area is 5. So they'll take first is the larger area and highest grade. The final Gleason score or the total of the grade primary is the largest set and the secondary pattern. Wait, 4 plus 3, as you said, is one thing that we'll have to. It's bothersome. Yeah. देखिए अभी 5 plus 4 है. 5 plus 4 भी है या 5 plus 3 भी है. 5 Okay, plus I think the second one will be the second less extensive but with a higher grade. So, for example, if you say this is 2 things, no? Yeah. In this, it would have been like 4 is extensive, second extensive is 3, and there has been another probably 5 or say 3.
3. Because 4 plus 4 So the second is वरना not 4 just plus 4 ग्रेड कैसे बनाता? वो 4 plus 4 में तो हाईएस्ट भी 4 होगा और मोस्ट कॉमन भी 4 होगा. no. See, first we will have to see which is spanning, extensive. So that is first digit is okay. Compared to, so your second digit will be, it should span less than the first area, but compared to other grades, it should be higher. इस लॉजिक से कभी 4 plus 4 और 3 plus 3 नहीं आएगा. वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, कोई नहीं, हम तो एग्जाम में लिखाएंगे. Anyway, we'll see. Okay. Next, going to, so broadly, we're going to discuss prostate like this. Local disease. So local disease will encompass confined to the prostate or confined to the pelvic nodes. Then we will see how they respond to your therapies, whether they become fully responsive and show it as PSA declining and patient will be stable, or PSA keeps on increasing, there won't be structural disease, then what to do? Then there will be structural disease. The structural disease, you should see whether it is in pelvis or it is systemic, and whether it is in systemic, you should see bone or other visceral metastasis, and you have to see for PSA. Another thing is whether this was previously treated with some form of hormone therapy. So radiographically, there is a metastatic disease, whether it is hormone sensitive or resistant depending on previous treatment. So predominantly your treatment in prostate will revolve around, in systemic therapy of choice, it will be around ADT, your androgen deprivation therapy. Any form of local therapy will revolve around radical prostatectomy, EBRT or other forms of RT, and local therapies. When you're suspecting systemic spread or there is no evidence of structural disease in the pelvis, but the PSA is alarming, then you will resort to some form of systemic therapy. Then systemic therapy is predominantly ADT with some form of androgen receptor blockade plus chemotherapy. So chemotherapy is predominantly when there is visceral metastasis. So which are the different groups? Each one we will discuss as we go on. So what you have to know, whenever they say androgen deprivation therapy, they mean two things. Either the patient has got permanent testosterone depletion by orchidectomy, or you have suppressed using LHRH agonist or antagonist. If you're using agonist, because there will be flare symptoms, you have to give some form of end receptor blockade. So you will give it with some type of enzalutamide, bicalutamide and all that. Okay. So whenever they mean ADT, it is suppressing testosterone, surgically orchidectomy, or by using LHRH agonist or antagonist. Most of the time it is antagonist that is used. Agonist that is used. Antagonist, Degarelix is a little costlier drug, and usually they prefer using LHRH agonist. So each subset we will just go in detail, knowing what are the options, what are the side effects. So LHRH agonist, they are given in a sustained manner over a long period of time, so that there is desensitization, deregulation, and there is decrease in drive for production of testosterone. The examples are Lupride and Goserelin. Lupride is, I think, 11.2 mg given as subcutaneous. No, 22.5. In prostate it is different, in breast it is different. Lupride is 22.5, जहाँ तक मुझे याद है.
What I remember is in prostate it is different. It is different in breast. The dosing. So that we'll confirm. And goserelin implant is given. Here, what is bothersome is tumor flare initially till there is a suppression of LH, RH. So it lasts for about 2 weeks. So here you will give some form of androgen blockade along with it. Then coming to agonist. Here the action is rapid. It will happen within 24 hours. There is no tumor flare or no need to add it with an anti-estrogen. It reaches the level of castration, that is less than 50 nanogram per ml testosterone within 7 days. Here especially it is used in emergency situation where there is full-blown metastasis impeding a spinal cord compression and patient is very symptomatic, you cannot do orchidectomy, then this is another resort where you can offer the patient LH-RH agonist. Example is Degarelix. It's given as 20 or 40 mg per ml vial subcutaneous. So initially there is a loading dose followed by a maintenance dose. So it is almost equivalent to orchidectomy. So Degarelix is LHRH agonist or lupride? Sorry. Antagonist. Antagonist. Sorry. And X वाला Yeah, is immediate antagonist. Relix में X आता है ना, X is antagonist. देखो मेडस्केप पे लिखा है लुप्राइड का डोज, विल क्लियर इट अभी तो याद रहेगा. एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, लुप्रोन इज 7.5 milligram IM monthly or 22.5 IM 3 monthly or 45 IM 6 monthly. Okay. This is for prostate. 7.5 per month or 22.5 every 3 months. We normally give it for 3 months क्योंकि PSA 3 month पे देखते हैं ना. So that is the logic. We normally give it for 3 months. So 22.5 every 3 months. And for breast cancer, they've written in premenopausal women, ablation off label. It is 11.25 every 3 months up to 24 months in breast cancer. Okay, 11.25. वो ब्रेस्ट में है, प्रोस्टेट में इट इज डबल 22.5. एंड दूसरा ग्लीसन का आई एम सीइंग ऑन विकिपीडिया, उस पे वो लोग ऐसा कह रहे हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स सीन. टू मोस्ट फ्रीक्वेंट, the grades of the most prevalent and the second most prevalent, if at least 5% of the total are added together to yield the overall Gleason score. So it is the first, that is the most common, and then the second most common. The only issue is if the entire pattern is, वो 5% का कट ऑफ इसलिए बोला है because if the second pattern is less than 5% or the entire specimen is composed of only one pattern, then you add that pattern only twice. मतलब अगर grade 2 है almost 99%, then you will have 2 plus 2 or whatever. Otherwise it is always the most common followed by the second most common. Okay. Fine. First most common, second most common, and this should compose of more than 5% of. The second common has to be at least more than 5%, 5 or more than 5. तो हाईएस्ट वाले की वैल्यू ही नहीं है क्या? मतलब नहीं, हाई वही तो मैं कह रहा, मोस्ट कॉमन पैटर्न अगर 100% है तो उसी को डबल कर दोगे आप 2 plus 2. अगर मोस्ट कॉमन पैटर्न और अगर 2 पैटर्न है कम से कम, तो द सेकंड नंबर दैट यू आर पुटिंग हैज टू बी एट लीस्ट 5% ऑफ द टोटल. एट लीस्ट 5%. दैट आई अंडरस्टूड, बट मान लो हमने 12 कोर्स लेते हैं, ठीक है, 12 कोर्स में से 5 कोर्स में या 6 कोर्स में मान लो 4 आता है, ठीक है, और सिर्फ 1 ही कोर में 5 आता है, बाकी सब में 3 आता है, तो तुम फिर 4 + 3 बनाओगे, उस 5 को इग्नोर कर दोगे क्या? आई थिंक टोटल मारते हैं ये लोग, मतलब कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स नहीं गिनते ना ये लोग उसमें. अरे मैं तो एग्जाम्पल, मेरे को अब उनकी स्लाइड्स तो उतना मैं नहीं देख पाऊंगी ना, मेरे लिए मतलब मान लो 100% इज 12 कोर्स, 12 कोर्स इज 100% ना, तो उन 12 कोर्स में जो भी वो लोग काउंट करते हैं उसमें कुछ टिश्यू आता होगा, उसको कुछ परसेंटेज देते होंगे, तो 4 + 5 रहेगा ना. हाँ, तो पर तुम बोल रहे हैं कि
फर्स्ट कॉमन इज 4, सेकेंड मोस्ट कॉमन मान लो 3 है, एंड फिफ्थ का सिर्फ एक ही मतलब 5% एक ही स्लाइड समझ में गया। फिफ्थ ग्रेड आया। मतलब तुम कह रहे हो 3 है, समझो 60%, 30%, 20%, 10%, तो उसमें तुम कैसा रखोगे? बराबर। ठीक है, तो मतलब इसके हिसाब से इट हैज टू बी मोस्ट प्लस सेकंड मोस्ट, फिर वो तीसरा कोई भी ग्रेड का हो, डजंट मैटर। हाँ ऐसा ये मेरे कहने का मतलब था। ठीक। हाँ, वो मुझे अभी कहीं देखना पड़ेगा पर फिलहाल तो ये कॉमन और क्योंकि सेकंड मेरे मोस्ट को कॉमन। पता था कि एक हाईएस्ट रहता है और एक मोस्ट कॉमन रहता है, पर जो मेरा सीक्वेंस था वो मेरे को लगा था जो फर्स्ट वाला रहेगा दैट विल बी द हाईएस्ट वन एंड सेकंड वाला विल बी द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, तो जो लॉजिक मेरे को जो 4+3 है, क्योंकि उस अगर वो सेकंड वाला हाईएस्ट रहेगा तो कभी भी 4+3 कैन नॉट बी देयर, ये मेरे को डाउट था। फिर हमेशा जो हाईएस्ट वाला है वही सेकंड नंबर रहेगा ना हमेशा कोर में। नहीं ना, 4+3 और 3+4 में ऐसा ही हो गया ना। मोस्ट कॉमन पैटर्न 4 है तो वो पहले आया, सेकंड कॉमन पैटर्न 3 है तो दूसरा आया। हाँ, और 3+4 जो तुम्हारा के अंदर मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है पैटर्न 3 उसके है। हिसाब से तुम्हारे वाले कॉन्सेप्ट में 4+3 और 3+4 का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पर अगर मान लो 5 वाला हिस्टोलॉजी है और उसका परसेंटेज कम है तो फिर हम उसको बता ही नहीं पाएंगे। You should just report it, I think. That's all. तो Okay. एक्चुअली हम पैथोलॉजिस्ट नहीं है, पर ये एमसीक्यू बहुत रॉन्ग किया है इसलिए। चल Next, by ablation of androgen synthesis, glutathamide, it will actually inhibit the formation of steroid hormones in the adrenaline by inhibiting all the synthesis pathways. So here you will have near total blockade of steroid hormones, and you will have to supplement the other ones that are also deficient. So like they'll have nausea, anorexia, lethargy, skin rash, hypothyroidism, and nystagmus. Ketoconazole, it is also another P50 450 cytochrome blockade. Onset is very rapid. Testosterone drops within 4 hours, and here with continuous treatment, there is all that castration level of associated symptoms like hot flush, all that loss of libido, infertility, all that, and it needs some form of secondary hormonal manipulation, like you will have to supplement by hydrocortisone. Abiraterone is it is potent, selective, irreversible inhibitor of cytochrome P17, which inhibits 17 alpha hydroxylase. So here there is even when there is decrease in synthesis, there will be alteration in ACTH, where the ACTH increases, and there is decrease in cortisol. So that is why the side effects, electrolyte imbalance like hypokalemia, fluid overload, patient will be hypertensive, and since cortisol is less, you will have to supplement it with prednisolone. So abiraterone is always given in combination with prednisolone. So it is potent, it is selective, it is irreversible blockade of cytochrome P17. So I remember is that it has ABC. AB will increase, abiraterone will cause increase in ACTH, C decreases, that is cortisol, and this causes, because there is increase in ACTH, it causes hypertension, less potassium, and fluid overload. Since you're causing suppression in one of the steroid synthesis pathway, you'll have to substitute with prednisolone. Then coming to end receptor blockade. So when you block the androgen receptor at the terminal periphery, they are anti-androgens. So classical steroid anti-androgen is cyproterone acetate. It directly blocks the AR. So there is here
there is some form of negative feedback or escape mechanism where you won't get full testosterone blockage. So the other side still produce some form of testosterone, or it's converted from estradiol to testosterone. So here your sexual dysfunction, loss of libido is not as much as other central pathway of testosterone blockade. So here the toxicities that you will have to remember is liver toxicity, GI in the form of diarrhea. Since there is other pathway of formation of the conversion to testosterone, and there is increase in even estrogen, there is gynecomastia. So here it is not complete blockade, but it definitely is better, and it is used in standard of care treatment. And the other next generation anti-androgens they are non-steroidal, starting with flutamide. It blocks the testosterone at the receptor level, so it is androgenic. It does not induce hypogonadism because there is LHRH increase. Here we are blocking at periphery. Some of them that escape will still produce testosterone, and testosterone which is produced at other sites are converted into estradiol, and that leads to gynecomastia. So all of these anti-androgens have altered LFT, so monitoring is important. Then coming to bicalutamide, it's having long serum half-life of 6 days. It is given one dose per day. It has got better compliance, and side effects pretty much are the same. Next is nilotamide, not very commonly used. Enzalutamide is used. It's AR antagonist. It completely blocks the AR by blocking the nuclear translocation and binding to DNA. It has not got any agonistic action. So there is not much of gynecomastia like how the other groups of anti-androgens had. It is by evidence known to improve the overall survival and radiographic progression-free survival. Except the gynecomastia and LFT, you can write other side effects like fatigue, diarrhea, and hot flushes. When you write in common about the side effects of anti-androgen therapy or androgen deprivation therapy, you have to mention about hot flushes. Here basically you are depriving the patient of male sex hormone, so it will pretty much have like postmenopausal symptoms. There'll be impact on cardiovascular and even bone health, and there'll be change in body habitus like gynecomastia. There'll be predisposition to metabolic syndrome and diabetes. So what you have to write is hot flushes. They are prone to osteoporosis, so you have to give them supplementation with calcium and vitamin D. There will be erectile dysfunction and loss of libido. There is change in body habitus, and there is a diabetic and metabolic syndrome like picture. Going to prostate. एक मिनट सहाना, वो वापस से pathway दिखाना ना, figure वाला जो just before this. Okay, so the figure and can you just repeat the number of the drugs that we studied in every path? Just the names, that is also enough. Okay, so the hypothalamus will give GnRH stimulation to pituitary, that will secrete LH and ACTH. So to stimulate a pathway to testis and adrenal, that will produce testosterone, and they act on end organ. Now testosterone is also converted into its active form by 5-alpha reductase. So now the pathway is anything that is still your end organ, that is AR receptor, it is central blockade. So you will give some form of agonist or antagonist acting on GnRH, the releasing hormones. So the antagonist is degarelix, the agonists are goserelin and luprite. Coming to testis, here you can do surgical orchidectomy. Then coming to adrenal, here you will block the enzymes in the pathway of steroid synthesis. So the drugs here are, they can be steroidal,
it can be old generation like amino, glutamide, and non-specific ones like ketoconazole, where they are not specific to one pathway. Pretty much, they inhibit all the steroid synthesis. Then coming to abiraterone. Abiraterone is an inhibitor of cytochrome 17. It is irreversible blockade, where there will be counteractive increase of ACTH, which causes hypokalemia, hypertension, and fluid overload. Even you can use radiation as a form for ablating the adrenal gland. Then coming to end organ, that is your androgen receptors. If you block them at the end stage, it can be steroidal or non-steroidal. The steroidal ones, example of steroidal one is glutamate is not steroidal. What was just a second. Okay. So cyproterone acetate is the steroidal one. The non-steroidal ones are all the amides: flutamide, bicalutamide, nilotamide, and xalutamide. Of this, enzalutamide is the most potent because it has not got agonistic action, where there is conversion of testosterone to estradiol in some sites. So here it is only antagonistic action. There will be complete blockade of testosterone activity. It has got OS and PFS benefit. It has not got gynecomastia side effects, but other side effects like fatigue, diarrhea, and hot flushes do exist. So the pathways from hypothalamus to your pituitary, from there to your end organs like testes and adrenal, and from there wherever testosterone is acting, because prostate is a testosterone responsive, hormone responsive cancer. Okay, this is the pathway. So hypothalamus, pituitary, you'll write testis, then you'll write prostate to just know the active form of testosterone. And at end organ, this is the pathway. So these are the AR receptors. They get, after combining with DTH, they get translocated. This is the androgen responsive elements on the DNA. So there will be increased cell proliferation, oncogenic signals, and all protein pathway. So this is the diagram. Okay. Now let us go to, so I don't know, I have it. Okay. Right. Coming to vitamin E and selenium, select trial, they've used this and not much of benefit with supplementation. So in case they ask about prevention, this is one of the things. Then coming to screening. Screening is a question. In screening, I will be discussing two trials, EAU guideline and followed by PSA. PSA will go into what is PSA, PSA kinetics, what is those markers that makes PSA interpretation more specific. So this is what we'll discuss. Now coming to screening of prostate cancer. While screening of prostate cancer, you should remember three things. Over time. So if 0.2 becomes 0.4, what time it is taken to double it? Is it 3 months, 6 months? Rapidly progressing will tell you the bad tumor biology. Then coming to density. With the help of MRI, you will know the tumor volume. That will be your denominator. In the numerator, if you use total PSA, then you will get the PSA density. PSA density has implication on interpretation even in screening. In diagnosis, in risk stratification, a cutoff of 0.15 is used. More than that, they say that it is a high burden disease. So in very low risk, the PSA density should be less than 0.15. Then coming to the precursor form of PSA, and after they cleave, they become free and they get bound. So the pathway is, this is the pre-form where PSA is with, in the pre-pro PSA. Then by enzymatic action, it gets freed. It becomes
PSA free in serum, but it gets bound to proteins, and it is bound PSA. What you have to know is, in cancer, see, tissues like BPH, prostatitis, there is increased PSA production because there is increased cell which is well differentiated, and it will form more PSA. But in cancer, there will be disruption of the membrane, and already formed PSA will get released. So it will not. It will mostly be in the uncleaved form, and it will the free PSA component will not be so much because it is not processed well. So your free PSA is inversely proportional to cancer. So there is low free PSA in cancers compared to other conditions. So they have taken this pathway to devise many indices, biomarkers, to increase the specificity. So they've come up with prostate health index where they use three things. One, uncleaved pro PSA, free PSA, and bound, that is total PSA. So they have given cutoff again with respect to age. If you have a person older than 50 with the alarming PSA level and negative DRE, you will add this formula and get a score to say if this person is really having an increased risk of developing cancer. To these three things, if you add human callicarin 2, then it is a 4K index. These are serum based markers. Urine based marker is prostate cancer antigen 3, and even TMPRESS2 ERG fusion gene is another biomarker that is found in urine. Now there is a role for image based screening for high risk people. In case you found PSA that is in alarming range, then you did some MRI. So there is prostogram. It's an algorithm which incorporates your PSA with the features of MRI, and they have come up with prediction of cancer risk. In your imaging, you have to know TRUS, MPMRI, and PIRAT scoring. In your metastatic workup, you should know PSMA PET and other bone imaging if the patient is symptomatic. Coming to biopsies, there are the recommendation is at least 10 to 12 cores you have to get. So it is a systematic biopsy that is done. Transperineal is preferred over TRUS, and this is an NCCN recommendation. MPMRI, I'll tell you at the last because I've got some pictures I will show you, because there are three sequences: T2, TWI, and dynamic contrast enhanced imaging. They will take the peripheral zone and the central zone signals, they will add up, and they have come up with the PIRATS 1 to 5 score, where the likelihood of malignancy increases with an increasing number. There is special mention in the NCCN about tissue-based markers, like how we had 21 gene oncotype DX. There is 22 gene prostate gene risk panel. There's a complete one, a template for it that we will discuss, because that is also making sound recently. So why this is important here? Like the conventional risk groups, they've used additional marker to risk stratify these patients, to analyze the recurrence risk score, to know who should receive short or long duration of ADT. The very convention risk stratification is the AMICO, where there are only three risks: low, intermediate, and high. NCCN has added 2 extra risks, making it 5 risks, that is very low and very high, and intermediate they have divided into favorable and unfavorable. What I remember is for surveillance, your active surveillance, this is the very low risk, where it is non-palpable disease T1A to C. It should be grade group 1. PSA should be less than 10. PSA density should be less than 0.15. Fewer than 3 biopsy or fragment score should be positive, and less than 50% cancer in each core.
So all of this is indicated to remember low, intermediate and high. PCA is more than 40. So for very high risk, remember 45. So for high risk, start from 3, 3, 4, 5, T3, 4, 5 group. For very high, start with T4, 5 is grade group. Now we talked about active surveillance. In active surveillance, you will keep repeating digital rectal examination. Biopsy is not repeated until and unless there is suspicion. So there is role for digital rectal examination, serial PSA and MRI that is incorporated in your active surveillance. So other requisite than it coming in very low risk category, the life expectancy should be more than 10 years cutoff. The previous NCC and the cutoff was 20 years. Now it is brought down to 10 years. If the same very low risk patients have a life expectancy of less than 10 years, then you can just observe and do nothing. So to decide your management for very low risk, apart from that inclusion criteria, you should have their life estimation. Then coming to local modality, we will just go through radical prostatectomy, lymph node dissection and EBRT. So radical prostatectomy, usually it is for a good performance status patient with organ confined, and some T3 also is included in them. You will why beyond this you don't, because it will go in for multimodality treatment where RT has to be added. And role for salvage radical prostatectomy in NCC is not recommended. That is relapse after EBRT or non-response after radiation. They basically do biopsy, and if you find viable cells, then you will go for ADT, and they have not given radical prostatectomy as one of the option. But this is also an option that you can consider. When do you add lymph node dissection? Because it has got therapeutic value, you pretty much combine radical prostatectomy with lymph node dissection. So your echelon is obturator, then you will include external iliac. So there are three terms that you'll have to remember. The limited PLND for very organ confined low risk cases, you will resort to removing only obturator. For this, first you should know the boundaries. Proximally, you will stop till bifurcation of common iliac. Distally, you will go till Cooper's ligament. Anteriorly till external iliac vein, and posterior to the pelvic floor. The medial limit is the bladder wall, and lateral it is the pelvic wall. So medial lateral are walls, anterior posterior are vein and the pelvic floor. The superior is bifurcation of common iliac, and distal is Cooper's ligament. So if you're doing for a very risk, you have three PLNDs. So they are limited, standard or extended. If it is only obturator, it is limited. If it is external node, it is standard. If it is internal nodes, it's iliac. Pretty much the standard template is you include obturator, external and internal iliac. So SLNB role in prostate cancer is not proven as of now. Here now the open method is pretty much replaced by radical prostatectomy, and it has got similar oncological benefits with increase in safety profile with decrease in incontinence. So even at the best hands, you still have 20%, but it is a lot more better than doing open procedure, and about 5% have severe incontinence. Here the blood loss, the hospital stay, the time for procedure is all less. Then after you have done radical prostatectomy, you have got the specimen. There are some things that you must know. So you will see for the positive margins, you will see if the disease is T3, you will see if the node is extracapsular invasion, and you will see if there is the PSA level after prostatectomy should become undetectable. You will see how much of your baseline PSA is dropped. So then comes the term PSA persistence or recurrence after radical prostatectomy. It is the failure of the PSA to fall to undetectable levels
after radical prostatectomy with a subsequent detectable PSA that increases or on two or more determination. So when you do serial monitoring, it keeps on increasing, but it will never come down. So now what do you have to suspect? Now you've already done a radical prostatectomy. The PSA is not fallen to undetectable level. So the chances that you have left behind the disease in a margin negative in a T3 is very unlikely. So probably your nodal dissection is not good. There might be disease there, but if you are very confident that the nodal disease is not there, then there will be some form of systemic metastasis. So what are your option? You will do imaging. On imaging, if you find there is a pelvic confined disease, whether you will see it is in the bed node, if not, whether it is a systemic disease. So you have options as post radical prostatectomy, RT is an option. So you can resort to RT. If you think it is nodal disease or systemic disease, then you give androgen deprivation therapy with abiraterone, anti-androgen. So it can be single modality, bimodality, or trimodality. All of these three are option for PSA persistence or recurrence after radical prostatectomy. Then coming to radiotherapy. What if you resort to radiotherapy in the first instance? According to trials, both are equally oncologically safe and can be chosen as their primary modality of choice. So if you give radiation, it is mostly given as IMRT or IGRT technique. There is role for proton beam therapy here. Also, there is role for brachytherapy and SPRT in very, very chosen cases. You have finished radiation. For high risk patients, you will go beyond 80 gray. For intermediate, you will stay around 75 to 80. And in low risk, it is 75 to 80. What is biochemical failure? For example, now you gave radiation, then after retain it. So there are three options. Here, salvage. Is this for this biochemical failure is to assess post RT or post prostatectomy recurrence, or is it for only post RT? Post RT. Post RT. Okay. So post radical prostatectomy, you will say PSA recurrence or persistence. That is the term that they use. In NCCN, when we go through the template, it's the same word. So there are two templates. I think I have added here only. So basically, post surgery, we have PSA persistence or recurrence. That is when you decide to give radiation, for instance. And after radiation, now since you've exhausted all your local therapies, now if it rises, it is recurrence, na? Biochemical failure. Radiation therapy recurrence or biochemical failure. So for that, you should know whether that PSA raise is because of any pelvic disease that is remaining, which is not responded to RT. So instead of RP, they say first you perform a biopsy, see whether there is viable tissue. Then here you can still wait because radiation can have a long-term effect. You can still wait. So monitoring post RT recurrence is one of the options. Second is, instead of doing as radical prostatectomy, resort to some form of local procedures like HIFU, then PDT, then laser. All these local form of therapies are used for biochemical failures. Instead of doing that is what NCCN says. Otherwise, use some form of androgen deprivation therapy like ADT with abiraterone. So here what you have to remember is, since you have used RT again already, surgery would have been an option, but they have not used it. Instead, less invasive, like only biopsy to be very sure there is viable tissue. Then some form of local directed therapies have been advocated along with your ADT and abiraterone.
Okay, so this is what the terms that they've used. After RT, it is biochemical recurrence or no biochemical recurrence. After radical prostatectomy, they've used PSA undetectable or PSA persistence. So these were the options. So in them also, first in your prostate management, you have to know their life expectancy. Then you will have to know their risk stratification. You have to know whether it is a pelvic confined disease or extra pelvic disease. In pelvic confined disease, you should know whether it is lymph node metastasis or prostate bed disease or nodal disease, or there is disease elsewhere. Disease elsewhere, again, you have to know whether it is bone recurrence, bone relapse, bone primary metastasis, or there is association with visceral crisis as well. So lesser than expected, like less than 10 years, observation is also a modality. And localized disease, you have two options. You go to surgery or radiation, following which the options differ depending on persistence of PSA or there is biochemical recurrence. So we have defined all of these. So this is what they in very low risk that we discussed, there is an option of active surveillance, which we discussed. After radical prostatectomy, if there is persistent, that is elevated PSA, what to do? Here again, if the life expectancy is less than 5 years, you still can observe till they really progress, and you can just resort to some bone directed therapy. So pretty much this is it. Then even beyond this, you gave ADT, you gave abiraterone, they are still progressive, so you'll re-image to find the diseases appeared elsewhere. If it is bone, you can give some bone directed therapy. If it is visceral, you can add chemotherapy. In radiation, so these are some of the trials. I did not find them very important. Okay, the recent developments in your radiation technique. So they have made mention about SBRT, proton beam therapy, and rectal spaces to decrease rectal mucosa associated complication. Then role of prostatectomy without PLND in metastatic setting. They mentioned that in castration naive low burden disease, so you can give radiation to, so you can give some form of local therapy. There is mention of even prostatectomy, but that in NCCN, anywhere in salvage or for cytoreduction, it is not mentioned anywhere. So in any place, because of the morbidity of surgical morbidity and their incontinence, they always resort to EBRT as some form of local therapy. So even in metastatic patients, if there is low burden disease, PSA is very high, you have given ADT, you can still give some form of EBRT to bring the disease under control. They have mentioned about brachytherapy, the low dose brachytherapy 0.5 to 2 gray per hour, high dose is more than 12 gray per hour, iodine 125 and palladium 103 has been used, and they've given some guidelines where you can use low dose brachytherapy in very low risk group, like T1B and some of T2, and grade group up till 1 and 2 are less than PSA 10, small volume prostate of less than 50. This you can remember or you can omit. Now coming to metastatic. To know the metastatic, first let's know what are the options available. For that, you should know this diagram. This tabular column. So whenever you are ascertaining, a patient to be metastatic, you have to know whether they are hormone naive or they've been previously treated with ADT. That is one. Your metastasis should be quantified as to bone only or visceral as well. Depending on this, there are category of recommendations. So, castration resistant prostate cancer. If you take only this entity of CRPC, it contains of two subsets. It can be metastasis negative, so M0 CRPC or M1 CRPC. So by definition, the patient should have castration level
testosterone that is less than 50 mg per 50 nanogram per ml, and radiologically the patient should demonstrate no metastasis. It becomes M0. If there is metastasis, it becomes M1. In this categorization, in M1 disease, there is role for chemotherapy. This is pretty much it. Next, if this patient is de novo or recurrent metastatic. So let us take box 1. There is no prior challenge of chemotherapy. So this patient first came to OPD. He's come with bone and visceral metastasis. So this patient has not got any form of chemo or hormone therapy. So for them, you can start with single agent anti-androgens, or you can give chemotherapy. So you can start with abiraterone, docetaxel as chemotherapy, enzalutamide, which is anti-androgen. So these are the 3 category 1 options. In prostate metastatic cancer, in biopsy, upfront genetic testing is mandatory. So you will even search for your BRCA mutation. In case you find a de novo metastatic treatment naive patient as BRCA positive, then there is role for olaparib, niraparib, with or without abiraterone. Then comes to your metastasis directed therapy. For symptomatic bone metastasis, you will resort to give radium to them. Immunotherapy is also an option, that is sipuleucel. Talazoparib is also an option. So the trials for PARP inhibitors in prostate are Profound and Talapro. For talazoparib, it's Talapro. For olaparib, it's Profound. Then coming to this patient is recurred systemically. He has received some form of hormone therapy, but no form of chemotherapy. Since he is chemo naive and there is metastasis, the category 1 recommendation is give chemotherapy to him, especially when there is visceral metastasis. For example, this patient recurred in only one area of bone, it is symptomatic, then you can resort to only radium. So chemotherapy is a priority to previously hormone treatment received patient, but chemotherapy naive. Then if this patient has received some form of chemotherapy, then he progressed, then you can add single agent abiraterone. If they have received docetaxel before, then give cabazitaxel. So for docetaxel resistant patient, it is cabazitaxel. Another anti-androgen is enzalutamide. What you have to remember in a metastatic setting is don't exhaust your resources, give monotherapies, give targeted therapy as and when it is indicated, and keep your subsequent therapies for progression or relapses. So in all of these boxes, what you can find is here it is monotherapy, unlike your localized or loco-regional disease. So all your category 1 recommendation depends on what you have not used prior, use it now, and it will be monotherapy. In case you have exhausted your docetaxel, it has progressed. You gave them hormone therapy, it has progressed. Then comes your role of PRRT. So lutetium PSMA 617, it is very effective even for bone or visceral metastasis. So this is one of the therapy, and it is category 1 recommendation. And here, if you have not used targeted therapies or immunotherapies, you can still use it. So radium 223 is category 1, olaparib is category 1 for hormone for HRR. Then homologous recombinant repair mutation ones. If it is MSI high, then it is pembrolizumab. So in metastatic setting, definitely you will go and do NGS on these biopsies. So some of the trials which you just can mention after writing all of them. For docetaxel, it is chartered and stampede trial. For abiraterone with prednisolone, abiraterone is always given with prednisolone because there is cortisol suppression. So latitude and stampede. Apalutamide is Titan, enzalutamide is Arkees or Enzamet.
So you can remember for docetaxel and abiraterone with prednisolone. Docetaxel, chartered and stampede. Abiraterone is latitude and stampede. So when they give questions on castrate, so each word you can write their specific definition and treatment. So even here I'll just go through about extra things that have been added in Devita. So MRI is something I wanted to tell because there is a specific box only that they have mentioned here. This one. So this is called clinical pathway where the MP-MRI directs us what to do. One, to know the threshold for biopsy and how to manage further. So first about MP-MRI, what you have to know is this is how it is done. If MP-MRI, they take different signals from the peripheral and transition zone, and they have three sequences: DWI or ADC or T2 weighted, and they combine with your dynamic contrast enhancement, and they have come up with PIRADS 1, 2, 3, 4. PIRADS 1 is very low risk. So in prostate, anywhere 1 is very low risk, very low, 2 is low, 3 is intermediate, 4 is high, and very high, just like our NCCN risk stratification. So 5 says it's clinically significant and the chances of cancer is very high. So PIRADS 3 and above is an indication for biopsy. So there is a risk-directed management. So this is given in Devita, where MRI directs us. It will help us detect better. It will help us direct our biopsy to the more representative area. It helps us to triage the patient. It helps us in risk-based assessment. So with MRI saying it is highly suspicious 3 or beyond, do your biopsy. Systematic targeted biopsy, both. Pretty much same as what they have told in each of these pathway. It is repetition. So suspected prostate cancer patient, you did MRI. PIRADS became 3, beyond 3, do biopsy. And in MRI focus pathway also, it's telling the same. In risk-based pathway, you will add your risk scores. So, for example, this patient has a PIRADS 3 and he is low risk. Then you can avoid biopsy. If it is an intermediate or high risk, do your biopsy. Or vice versa. If this intermediate or high risk patient has even PIRADS 1 and 2, go ahead with biopsy. So they have incorporated even risk categories into your MRI. So it is PSA metrics. What is included is PSA, your PSA doubling time, density, and your DRE. And if this patient is on active surveillance, how to change the management. For example, the patient who was, since it's very low risk, and the PSA increased to something like intermediate, but the PIRADS says 1, still you have to go ahead with biopsy. So this will direct us to biopsies. Again, risk stratification, DMICO and NCCN have anyway told. This was the pathway. So the EDT and triads. NCCN pretty much says the same thing. What you'll have to do, this risk we discussed. Then 10 years cutoff that we discussed. Single modality, local treatment, ADT. Okay, about focal therapy, here you can resort to HIFU. This is ultrasound guided. It's a thermal way of ablating. It is, you can go to that area of suspicion, MRI guided or ultrasound guided. If you use thermal, other form is cryo. You can use photodynamic lasers, irreversible electroporation, focal brachytherapy. These are all focal therapy. So the common indication for all of them is it should be within the organ, no extra prosthetic extension, preferably unilateral. They should be away from bladder, rectum, and neurovascular bundle. Predominant and a dominant pathology should be located on MRI. So another table I wanted to show you all was risk stratification using genetic biomarkers.
So in even EAU, ESMO as well as NCCN, they have so genetics and prostate cancer, you will mention about when do you do germline testing or somatic genetic testing. For all metastatic, yes. For localized, high and very high risk group, those with family histories, you will be resorting to do genetic germline testing. But on specimen, definitely you will have to do for all metastatic, localized with high and very high, on biochemical recurrence or relapse cases to find out any targets. So this risk stratification, what are all the things? So for localized, there are some risk. Post radical prostatectomy, for metastatic, there are some models. So what do they do? In the first heading, they've given about the tools, then whether they are predictive to tell you the duration of ADT, or you have to change the treatment. Prognostic, they'll see who will do poor, who are high risk group for recurrence or metastasis. Then these are endpoint. By recurrence, they want to say whether it is distant metastasis, mortality. So these are the endpoints. So about gene expression, that is 22 gene genomic classifier, they have given elaborately in next paragraph, where they have divided depending on the cutoff as low and intermediate, high, and post RP biochemical recurrence, where there is low, intermediate, and high. So briefly telling about for localized disease, if you apply gene expression, that is 22 gene classifier, it is a prognostic model which will predict the distant metastasis. So what are the two things here? After applying, you can take these different treatment decision. So if it is an intermediate risk category or high, it will help you to decide the length of ADT, whether it is short course or long course. If it is post radical prostatectomy recurrence, then you will it will tell you whether you can use single modality RT or you have to add ADT to it. Then coming to post radical prostatectomy, again as we studied just now, 22 gene assay will tell you prognostic, and it is prognostic for distant metastasis also. In metastatic, germline, somatic, and imaging. So these are some of the predictive models. One, genomic and somatic, you can remember HRD for PARP inhibitors, MSI and tumor burden high for pembrolizumab as predictive model. So if they ask genetic biomarkers in prostate, this is one other thing that you can add, because this was new addition. So pretty much prostate, yeah, we are through. We'll go to testis. सहाना, ये yesterday's also notes share नहीं हुए ना अभी तक? I'll do. I was doing some addition and deletion. नहीं, that is okay. I'm just asking. You take 7 days also, कोई issue नहीं, because after you're done, we are not going to read prostate and testes. तुम्हारे notes में से ही पढ़ेंगे, तो you do what you. कोई दिक्कत नहीं. And that breast NCCN also I'll share. I forgot to share that. That is done. I'll share that. हाँ, but आराम से. But I was just asking कि नहीं हुआ है ना, because I was. नहीं, I have not shared. Okay. Why did I? Okay, test is fine. Okay. हमने क्या Monday से start किया? We started from Monday ना? Monday, yeah. Monday. इसको भी लग रहा है मूवी जाना है. चलो. So 1, 2, 3. So in clinical, it can be only 4 or. Where was the clinical? This is pathological only. Clinical, yeah. So it can be only two things. In situ carcinoma, when you do that open biopsy in surgically opposite side, you find CIS, then it will be clinical CIS, or if it is scrotal infiltration, T4 clinically. Everything is pathological only. So if it is well within the testis,
you will divide it as 1, 2 and 3. 4, scrotal wall involvement, so T4 is gone. Spermatic cord is T3, that is gone. Then the dilemma is between 1 and 2. If it is within the testis without LVI, it is 1. In seminoma, there is a division of AB with a 3 centimeter cutoff. Coming to 2. With LVI, if it is involving other structures which will form testis, it is 2 except the spermatic cord. So that is 1, 2, 3, 4. Coming to the node. Node 1, 2, 3. Less than 2 centimeter, 2 to 5, more than 5. Then less than 5 nodes, more than 5 nodes, pathological. It is inclusive by size and number of nodes. So by staging. So 0, 1, 2, 3, there is no 4. So TIS is 1. If it is confined to the organ, it can be T1 to any. T4, it is stage 1. N plus disease is stage 2. And metastasis is stage 4 with S3. This is for seminoma. Seminoma and non-seminoma, you will add S3 component to it. Non-seminoma में तो stage 4 रहता है ना? नहीं, so non-seminoma में भी stage 4 नहीं होता? No. Testis, no stage 4. Only difference between seminoma and non-seminoma is 1. Where there is size criteria also in seminoma, 3 centimeter. That's it. And if it is organ confined, T1 to T4, it is stage 1. With node, stage 2. Metastasis, or it's a surrogate. S3 is a surrogate for distant metastasis. Like there is some form of systemic dissemination in S3, so it is stage 3. Coming to testis, what we have to know is pathology. So from the germ cell, it becomes germ cell neoplasm. What is that? In situ, neoplasia in situ. So that is a precursor for your seminoma. Then it goes into different differentiation, and all of this will come into non-seminomatous category. So non-seminomatous category, yolk sac also. So seminoma comes from precursor GCNIS. The spermatocytic seminoma does not come from GCNIS. That is something that you'll have to remember. Coming to tumor markers. So it is one of those few malignancy where your treatment decision staging, everything is on your tumor markers. So coming to tumor markers, their half-life, normal range and the type in which they are elevated. Alpha fetoprotein half-life is about 5 to 7 days. Normal range is less than 40 microgram per liter. So this is S0 range. And it is elevated in embryonal, yolk sac and teratomas. HCG, it is about 24 to 36 hours. It is less than 5 international units per liter. It is elevated in 15% of seminomas, choriocarcinoma or embryonal Z. LDH is a tumor burden marker, so it depends on the lab preset value. So the half-life is about 24 hours. In any tumor where there is increased cell turnover, LDH can be elevated. So your treatment decisions pretty much will, or the S1, S2, S3 is predominantly on AFP and HCG. If there is increase along with LDH, yes, it is going to be contributory, not isolated LDH alone when the other twos are normal. So that together it has more value. So what are the other conditions where this can be elevated in a non-testicular malignancy? So AFP, you can write about HCC, all that liver related, HCC, viral hepatitis, cirrhosis, hereditary tyrosinemia, then other genetic syndromes like ataxia, HPV pathology, predominantly it will be increased. In HCG, hydatidiform mole, hypogonadism, breast cancer,
Again, HPB, upper GI, this is elevated. In anywhere where there is increased cell turnovers, like skeletal muscle disease, myocardial infarction, thalassemia, leukemia, lymphomas, LDH is elevated. So histological classification is seminoma, non-seminoma. Seminoma, depending on their precursor, it is seminoma with pure seminoma with syncytial trophoblastic cells, spermatocytic seminoma. Non-seminomatous is embryonal, yolk sac, choriocarcinomas, teratomas, and mixed histology. So markers S0 if it is in normal range. S1 it is elevated, but their upper limit of LDH is less than 1.5, less than 5000 of HCG, less than 1000 of alpha fetoprotein. If it is more than 10 times, 50,000, more than 10,000, it is S3. In between this range, that is 1.5 to 10, 5,000 to 50,000, 1,000 to 10,000, it is S2. So the IGC-CCG, that is Germ Cell Tumor Risk Classification by International Germ Cell Cancer Collaborative Group, they have 2 risk categories for seminoma, 3 for non-seminoma. The only difference is so there is no poor risk group in seminoma. Here, any metastatic which is non-pulmonary. So pulmonary metastasis is taken to be good prognostic. It can be treated with local therapies, metastasectomy, like how you can treat the loco-regional disease. So it is a good category, whether it be seminoma or non-seminoma. So you don't take pulmonary meds to really distinguish between the risk group. So leaving that, if in seminoma, definitely there won't be any raise in your serum markers. Any visceral meds becomes intermediate group. Rest everything is in good group. In non-seminoma, your S1, S2, S3 dictates good, intermediate, poor risk. Plus, in your poor risk category, non-testicular or retroperitoneal as primary site. So, mediastinal primary with S3 of tumor marker is poor category. Good and intermediate is S1, S2. Otherwise, pretty much they remain the same. Pulmonary meds can come in any of the risk category. So the whole treatment, I have just divided it easily. So as you move down the stage, your treatment options become less and less. The lesser the stage, you have more the options. What you have to remember in seminoma, it is very radiosensitive, very chemosensitive. So there is definitely role for surgery other than orchidectomy is very minimal, like if you want to resort to RPLND. So before starting the discussion, there are some prerequisites that we have to know. These testicular patients are young, that they present at their young age. So most of them would have not even started their family. So fertility preserving option like cryopreservation, tissue preservation, artificial insemination, and all that reproductive thing should be one of the option in our surgery. Then because we are subjecting them for radiation, shielding the opposite testes is something that you'll have to include in your answer. Now, the minimum biopsy that a testicular malignancy will undergo is high inguinal orchidectomy. So your tumor markers, which is used for staging, is post-orchidectomy tumor markers. But pre-orchidectomy will help you know the disease biology, whether it is seminoma, non-seminoma. So you can get a fair idea about the disease burden as well as the biology. So after doing orchidectomy, which is the predominant source of tumor burden, and if you have the tumor marker source that you have eliminated, now whatever comes after will tell you the stage of the disease, whether is there any residual remaining that is translated into increased tumor markers. So in seminoma, there is no elevation of tumor marker. If at all HCG is elevated, it is seen in 15% of patients. Otherwise, seminoma, in histology, if there is mixed component, your treatment will go as per non-seminomatous component.
Okay. Then stage 1. Stage 1 is predominantly it is within the testis. Now, most of all, what you have to decide when you are deciding treatment is be less aggressive because the patients are young. More the lines of treatment, they have got toxicity. Since they live for longer time, they have associated secondary malignancies. So don't give them a morbid life. So even a single modality or just monitoring is an option where these disease can be picked up early and treated with single modality. So organ confined disease, that is stage 1. Now you've done high inguinal occluectomy. Then you will see whether it is seminoma or non-seminoma. In your further treatment, you have to see some adverse factors on your histopathology. If there is retate testis involvement, if there is LVI, if it is T4 scrotal involvement, then you give some form of therapy. It should be single carboplatin with AUC 7 or a low dose radiation 20 to 30 gray 20 or 30 gray of RT should be used. Otherwise, it is surveillance. Why? Because here the disease other than the testis, it is very less. It is about less than 15%. Second thing, and they are highly chemosensitive. Even single dose is enough to tackle micrometastasis, if any. So you have 3 modalities you can use. That is, here in seminoma, don't think of RPLND until unless you want to add also, it should be your last option. So it will be surveillance, RT or chemo. Surveillance mostly for all cases. If you want to use chemotherapy, it should be PT4, LVI or size more than 4 centimeter. And that should be single dose. Use as minimal as possible in stage 1. Then RT also very low dose, 20 gray. But this uses it's declining because single carboplatin has very less side effects and it is highly responsive, and cancer specific survival is more than 98% in stage 1. Even if you give some form of treatment or not. Okay. Coming to stage 2. By stage 2, we know there is nodal disease. Since it is seminoma, you don't take serum markers into consideration. Then you go by size. Whether it is A, B, C, it is by size, and stage 3 is by risk group in metastatic setting. So, by size, if it is less than 2 centimeter, it is stage 2A. If it is 2 to 5 centimeter, it is stage 2B. If it is more than 5 centimeter and metastatic, more than 5 centimeters, it is stage 2C, and 3 is metastatic. Usually stage 2C and stage 3 are treated similarly. So now you have options, that is chemotherapy, RT, even surveillance, yes. Lesser the size, you have more options. So you can have radiation, chemotherapy and surveillance also as option in less than 2 centimeter. But the preferred modality is radiation. So when you're doing upfront surgery, you can use modified templates for your radiation. You can forgo giving the risk site meaning of morbidity. So when we are discussing the radiation इससे free याद or आया RT, मुझे कि RPLND के मॉडिफिकेशंस पे 10 मार्क्स के 2 बार क्वेश्चन आया है. RPLND we will discuss types of RPLND, templates of RPLND, and when you will do what, and that too easily I'll tell you what to do. Now in stage 1A, that is nodes of less than 2 centimeter, you have RT, you have chemotherapy. So you can give radiation or you can give chemotherapy. Chemotherapy also you can give BEP, that is BEP or EP, 3 cycles.
Okay. Now, stage 2. Now it is 2 to 5 centimeter. Now the nodes can be a little bulkier for radiation field, where your radiation toxicity can increase. So better chemotherapy is preferred over RT when it is more than 2 centimeter, especially more than 3 centimeter. If it is non-bulky less than 3 centimeter, yes, RT can still be given. Otherwise, you'll resort to chemotherapy more than radiation. For stage 2C and 3, it is chemotherapy is preferred option. So here for metastatic, you will divide them into good risk and intermediate risk for number of cycles. So for intermediate risk, it is 4 cycles. You gave them treatment. Now, there was residual disease after treatment. Okay, wait for 6 weeks now. Then you have to see 2 things. The size criteria is an indirect evidence of viability of tumor. Usually, if it is less than 3 centimeter, the chances that the necrosis is more than the viable tumor is higher. And since it is seminoma, you are not thinking of teratomas. So you are clear. So less than 3 centimeter, the chances that more than 60% it is only necrosis. So in them, you will wait. You will wait till your RT acts, your chemo acts for further long time, and you see whether it will really decrease further by surveillance. Now, more than 3 centimeter, this is the only indication for PET in seminoma to find out residue, because PET has got high negative predictive value. If PET says negative, it is negative. If PET says positive, there are 2 ways of going about it. Biopsy confirms the viable cells, then go ahead with either you can do RPLND, or since it is chemo and radio sensitive, you can resort to giving radiation or chemotherapy. If you have given radiation already, give chemotherapy. If you have given chemotherapy, give radiation. But the preferred option that they say now is chemotherapy. Even RPLND is also an option. But if you want to write one answer, PET picked up positive disease. If you have done biopsy, it is positive, positive, then you resort to giving chemotherapy. Now, in case, you have done, you have to do resection. Sorry. That is for in seminoma, PET picked up biopsy positive, you will do RPLND because you want to know the histology now, whether it is short seminoma only or it is teratoma. necrosis. No, in seminoma there is no teratoma component, but still histologically your primary you might have missed some areas of non-seminomatous component also. नहीं, But इसमें एक्चुअली ये रहता है कि साइज फ्री बढ़ा हुआ रहता है, स्टिल ना वो नेक्रोसिस टिश्यू होता है, फुल रिस्पॉन्स आता है. तो परसेंटेज ऑफ नेक्रोसिस से हम डिसाइड करते हैं कि हमको आगे ट्रीटमेंट करना है कि नहीं, मतलब वायबल टिश्यू आई थिंक. Correct. So less than 3 centimeter, it means more necrosis. More than 3 centimeter, PET is positive, even biopsy also is positive, go for RPLND. Depending on your हमारे यहाँ तो मोर देन 3 सेंटीमीटर है. तुम बोल रही हो कि मेटाबॉलिक एक्टिव अपटेक है. हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिव अपटेक नहीं भी था, पर मोर देन 3 सेंटीमीटर था, और वो रिस्पॉन्ड सेकेंड लाइन कीमो वगैरह भी उसका हो चुका था. फिर हम लोगों ने उसका साल्वेज किया था बिकॉज in seminoma, because it's of negative predictive value, you want to decrease. For example, now you didn't do PET, you did surgery, all of it comes as necrosis. You're giving a morbid surgery for a young patient. This is what is the rationale behind it. So do an additional investigation, find out if there is PET pickup, definitely there'll be viable cells. If there is no PET pickup, you can still maintain to monitor the patient. You can do a biopsy and reconfirm also. So PET negative, you will monitor the patient according to NCCN also. If there is PET pickup, you will either do biopsy or you will do RPLND. For how many lines you will monitor, bhai? This is how it is, because these are young patient, you will give first line, then you will give second line. Then in NSGCT, there is a concept of desperation. Then you will do surgery.
nothing is working, still there is persistence, okay fine, नहीं, we'll that is for सीरम मार्कर, बट इसमें तो सीरम that is मार्कर what. का रोल रहता नहीं है. सीरम मार्कर तो इसके मोस्टली सबके बेस लाइन ही लेवल पे See, रहते the हैं. thing with test is, no, the incidence is not very prevalent for robust study. There can be all options that you can use, but what we are worried about is the complications associated with this management. They do respond, but when they relapse and you're exhausted with your treatment, that is when you will end up in trouble. So they say use, because they are usually, they respond to RT and chemo, they are not like they are resistant. So you did PET, then depending on that you took decision. Your histopathology, if it comes as residual disease, there was viable cells, then you have to give high dose chemotherapy, because those cells have not responded to your conventional treatment. If there is no viable cells on your histopathology, still they say give 2 cycles of EP. Okay, then coming to NSGCT. Okay. In NSGCT also is the same thing. What we have to know is, here the size This of is residual disease Chandra, is 1 na? This is centimeter. Chandra. So the size of the residual disease cutoff for non-seminomatous is 1 centimeter, and there is teratomatous component which is chemoresistant. So that can be persistent, which you will have to do surgery only. In non-seminomatous, because there is teratoma also, there is role for RPLND. So surgical role is also there. Now, seminoma, you did high inguinal orchidectomy, then you got your serum markers repeated and you staged them. Here again, organ confined disease, you have to see some additional markers for you to give additional therapy other than surveillance. So what are they? LVI, embryonal component in the specimen. This guarantees us to give 1 cycle of BEP. In non-seminomatous, it is 1 cycle of BEP for stage 1, because there is local recurrence rate of 50% if embryonal component is there. Short 1 and 2 will recur. So avoid surveillance in them and give 1 cycle of BEP. So stage 1 is done. For rest everything you can do surveillance. Then coming to stage 2. Now your size less than 2 centimeter, you can still do surveillance. When it is growing, then you can resort to RPLND, or you can give them chemotherapy. So your sequence is surveillance mostly, or RPLND more than chemotherapy. Now it becomes 2 to 5 centimeter, that is stage 2B. There is no role for surveillance here. You will do chemo or RPLND. Now, since your S1 and S2 are also incorporated in stage 2, if the tumor marker is also raised with nodes being 2 to 5, you will give chemotherapy more than doing RPLND. In more than 5 centimeter, because the nodal burden is high, there will be evidence of micrometastasis. You will definitely give chemotherapy. For stage 2C and 3, it is 4 BEP. For stage 2B and stage 2A, it is 3 cycles of BEP or 4 cycles of EP. So this is primary chemotherapy. Now you finished your primary chemotherapy. Then you will assess whether it is progressed radiologically or it is progressed by serum markers. If it is progressed by serum markers, give second line of therapy. That means to say the disease is not responding to the first line of therapy. Give your second line of therapy. Most of it will respond. In case they don't, then they say, now you have exhausted 2 lines. You can either give high dose chemotherapy with stem cell transplant,
or you can do some desperation surgery in a desperation that with the surgery at least the serum markers will come down. When the serum tumor markers are more, there is actually no road for surgery. It is chemotherapy predominated treatment. So desperation surgeries and serum marker is going on, you have exhausted your lines of chemotherapy. You know surgery may or may not work. In that desperation, if you do surgery, it is desperation surgery. Now serum markers have all come down, but there is persistence of disease. The persistence of disease says two things. It can be necrosis or it can be teratoma. For either of the things, it is surgery as your modality of treatment. So, post chemotherapy, so RPLND is termed depending on whether it is done as a primary setting, whether it is done post chemotherapy, or whether it is done desperation. So, your templates will also be accordingly only. So, the because the landing zone is para-aortic and inter-aortocaval and paracaval, it is the straight line along the aorta. That is your predominant landing zone, and it is included in all your fields. So first I'll show you this diagram. So your landmarks are the IVC, the aorta and the IVC till the bifurcation is your common template. Then you will use the additional ones are pelvic. So the standard template is this. Another thing is about IMA. Since the density of nerves around the IMA is more, you will resort to exclude this in a non-involved site. That is a modified template. So you will give radiation this way, ipsilateral node. On the opposite, you will stop till IMA. Beyond this, when the contralateral testis is not involved, you will not try to irradiate. So this is modified template. It is modified as like this till IMA, right or left till IMA. So these are modified template. If you write this is the standard template. Then depending on the sequence, it is told it is primary, post chemo or salvage, or desperation RPLND. Then nerve sparing RPLNDs, where you will stop short of IMA, and in that area you will not resort to dissecting it more. That is one type. Another thing is you will use your loops. You will be extra careful mobilizing. You will take all precautions not to injure that sympathetic and parasympathetic plexus around it. That is also your nerve sparing RPLNDs. So coming to RPLND, when you're writing RPLND, you'll write the template, you'll write the terminology depending on the sequence of RPLND. So in what you have to remember is when you're doing primary upfront surgery, you can either resort to modified or you can do standard. But post chemotherapy, because this is the chance that you have to remove and you are having a diagnostic dilemma also, you will resort to complete template. You will not do half-hearted job. And the extent here also, you can go beyond suprahilar, but it is not indicated. So your proximal extent, you will stop short at renal vessels. So in upfront, you have options of modified, but post chemo and salvage, you have to use your standard infrahilar, template. So this is what this the table says the same thing. You can write it in mix and match. So this is your sequence and different, whether it is upfront, post chemo, salvage, or desperation. Then about complications of each one, you can put this diagram as to where proximal distal extent, where you will stop, it will stop short at common iliac bifurcation, and this is the plexus where around the aorta inferior to the IMA, and it is even
found circumferentially. So even your just mobilization will also cause damage and nerve-related complications. So when you're writing, after you write options of these, because of their toxicities, you will not resort to do one or the other form. What is the disadvantage of surveillance? Surveillance, there is apprehension, patient should be compliant. You will use image-based investigations where radiation exposure by that is also more. And when patient loses to follow-up, they come in very advanced disease where there could have been a chance of better cure is lost. That is one thing. Then coming to RPLND. In RPLND, the advantages, yes, you will get to know the histological diagnosis from the specimen. You can base your treatment over that. The disadvantages, the surgical morbidity, the patient should be fed, the patient should undergo all of these. Post most of the chemo lines, the fitness of the patient also will be questionable. Now coming to chemo and radiation. Chemo, the hematological toxicities and risk of secondary malignancy like leukemia and lymphomas are high. Then coming to radiation, pretty much the same. Added to this is infertility. Non-shielding the contralateral testis is also something that we will be contemplating for secondary malignancies also. So these are the disadvantages that you will, complications you will add to these treatments. So here they have summarized the regimen. Single dose carboplatin, area under the curve is 7. That is important while you're writing. BEP regimen is bleomycin, etoposide, and cisplatin. EP is cisplatin and etoposide. Since this chemotherapy are cisplatin based, you have to write cisplatin based toxicities also in their complication. BIP is ifosfamide. B is for ifosfamide. VEIP is etoposide. Then high dose chemotherapy is etoposide with carboplatin. With high dose chemotherapy regimen, usually stem cell transplant is also indicated because most of them will not tolerate it. So, pretty much see. So consensus क्या था समाइनोमा में post हाइंगुइन ऑर्केक्टोमी post chemotherapy stage 3 PET CT more than 3 centimeter active uptake do an RPLND. Correct. बराबर ना. And non समाइनोमा में क्या था RPLND versus chemo का stage 3 and stage 2 में. You said it is more of a systemic treatment than a cycles 4 and 3. In 2B it is 3 cycles, in 2C and 3 it is 4 cycles. Only so cycle is RPLND? When do you do RPLND in non-seminoma? In stage 3 and 2C you will do chemotherapy, not RPLND. RPLND can be an option for your stage 1, stage 2A and 2B, less than 5 centimeter. And stage 2C and 3 mein after chemotherapy, when do you? When we do is, there is residual mass more than 1 centimeter, normal tumor markers, then you can do RPLND because the chances of it being teratoma is more than necrosis. So you have more than 1 centimeter. Okay, thank you. So that's all from my side. चलो. So पीनेट्स में ना देख मेन 1 पे सवाल आया, ये मैंने लिखा नहीं अभी, ये अलग से क्लास लेंगे मेन 1 मेन 2 का. इंसुलिनोमा पे अलग से आया है क्लास. ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें मैंने बेसिकली क्या क्या किया है, टाटा की जो टेक्स्ट बुक है वॉल्यूम अभी जो रिलीज हुई सितंबर में वो लिया है मैंने. उसके अलावा सैबिस्टन के 5-6 पेज डाले हैं, which is one of them is for genetics, molecular changes, and the other is carcinoid syndrome and heart disease. तो ये उसके चैप्टर्स हैं. दूसरा NCCN के 10-15 पेज हैं, वो टेक्निकली ये टाटा की बुक में सब कवर हो रहा है, बट मैंने डाल दिया है बिकॉज मेरे को आई वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट दैट आई कैन रेफर टू इन फ्यूचर. एंड दूसरा मैंने अपने खुद के प्रेजेंटेशन एंड दिशिता का प्रेजेंटेशन उसने संडे के क्लास में किया था,
उसमें से कुछ कुछ स्लाइड डाले, स्पेशली इंसुलिनोमा एंड ग्लूकागोनोमा एंड गैस्ट्रिनोमा के अंदर, बिकॉज ये दोनों ना, इंसुलिनोमा हमको फैट में उन्होंने अलग से पूछा था, सो दीज टू आर दे कैन पॉसिबली कम एज सेपरेट क्वेश्चंस। तो वो एक पूरा मतलब इसके अंदर समझ लोगे ठीक है, बट वो उसमें तुम पूरा कर सकते हो। तो ऐसे करके बेसिकली 70 पेज बने हैं, विच इज यू जस्ट हैव टू रीड 10, 15, 20 पेजेस, उसमें तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये टाटा की किताब है, उसमें उसने बोला है गैस्ट्रोएंटेरो पैंक्रियाटिक एनीटीज। ठीक है, GEP एनीटीज आर द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड एनीटीज, फीमेल सॉरी मेल प्रीडोमिनेंस है ना, हाँ मेल प्रीडोमिनेंस। मैंने कहा था ना तुमको, हर पूरे GIT में फीमेल प्रीडोमिनेंस फक्त गॉल ब्लैडर में है, बाकी हर जगह मेल है। पूरे बॉडी में भी सिर्फ थायराइड में मुझे याद है, इसके अलावा और कहाँ फीमेल प्रीडोमिनेंस है? ब्रेस्ट, ब्रेस्ट तो फीमेल है, ब्रेस्ट तो प्रोस्टेट पूरा मेल है, ऐसा कुछ भी बोल। नहीं, ब्रेस्ट मेल्स को हो सकता है, प्रोस्टेट फीमेल्स को हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तुम्हारा कंपैरिजन ही गलत है, तुम्हारे कंसेप्ट्स में राड़े है मैडम। 1% मेल में होता है, 1%। प्रोस्टेट होता है क्या फीमेल में? 0.5% भी? हाँ, अगर फीमेल को नहीं, प्रोस्टेट तो नहीं होगा, पर हाँ टेस्टिस तो हो सकता है। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरो पैंक्रियाटिक एनीटीज को साथ में ग्रुप करते हैं। इसके अलग अलग नाम है, कभी किसी ने गलती से पूछ लिया तो ये। ठीक है, सो जहां तक जेनेटिक सिंड्रोम्स की बात है, 4 याद रखने हैं अपने को। एक है अपना MEN1, दूसरा है NF1, तीसरा है VHL, चौथा है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। उसमें MEN1 का म्यूटेशन स्पोरेडिक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आयरन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर नहीं है। एक बहुत फिलोसफिकल बात याद आई है, मैंने कहा वैसे तो धरती पे इतने टॉर्चर है फीमेल लेडीज को, पर भगवान ने कम से कम कैंसर कम दिया है, तो कंपनसेट कर रहा है लग रहा है भगवान। नो कमेंट्स, आई एम द ओनली गाय इन द ग्रुप, मेरे को कुछ कमेंट नहीं करना है इस पर। आई एम आउटनंबर्ड राइट नाउ। कितने सहाना गई की है देख, 3:1 है आउटनंबर्ड। ठीक है, तो ये WHO का है, उसमें अपने को सबको पता है ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एंड ग्रेड 3 का न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा। उसके अलावा मिक्स्ड एंडोक्राइन, नॉन एंडोक्राइन मैलिग्नेंसीज भी हैं। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि सारे के सारे ग्रेड 3 ना, उनका माइटोटिक इंडेक्स हाई है। ये इसने लिखा है, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि ग्रेड 3 जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर रहता है ना, उसके अंदर यूजुअली 20 to 50 का रहता है Ki-67 इंडेक्स, और NEC के अंदर यूजुअली 50 से ऊपर रहता है। दूसरा NET है पर ग्रेड 3 है, तो ग्रेड इसकी वजह से है, और ट्यूमर है इसीलिए वेल डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पर भी ग्रेड की वजह से मोर देन 20 Ki-67 है, एंड कार्सिनोमा है इसीलिए पुअरली डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, दैट इज ग्रेड 1 ग्रेड। और दूसरा ग्रेड 3 NET और ग्रेड 3 NEC में फर्क क्या है, ये म्यूटेशंस का, MEN1 DAX ATRX और इसमें P53 and RB1। As far as I remember, grade 3 NEC is to be treated like adenocarcinoma. Yes, लिखा तो है नीचे। Okay. कहीं तो लिखा था, लिखा है कहीं तो लिखा है। ग्रेड उसका स्टेजिंग AJCC में लिखा है, तूने AJCC में पढ़ा रहेगा। ग्रेड NEC जो है हैज टू बी स्टेज्ड एंड ट्रीटेड एज पर द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सो ये आपका स्टेजिंग हो गया। ये पैंक्रियाटिक AJCC का स्टेजिंग है, पैंक्रियाटिक NET का AJCC का स्टेजिंग। उसमें कुछ नहीं है, लेस देन 2, 2 to 4, मोर देन 4, लिमिटेड टू पैंक्रियास, और ट्यूमर इन्वेडिंग एनी ऑफ द अदर पेरीपैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर्स, उसमें डिओडेनम, एम्पुला और CBD आया तो भी T3 हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ साइज। उसके अलावा कोई और एडजेसेंट ऑर्गन आया तो T4, N0, N1 और बाकी M में मोस्ट कॉमन साइट इज लिवर, तो M1 लिवर है, M1A। M1B is at least one extrahepatic site, M1C is both hepatic and extrahepatic. Pathological M1 is also the same thing. So इसमें ये याद रखना है तुमको, स्टेज 3 के अंदर T4 आ गया विच इज एडजेसेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट, या फिर N1 आ गया। ठीक है, और स्टेज 4 में M1 आ गया। तो ये AJCC स्टेजिंग है फॉर पैंक्रियाटिक NET।
that is grade 1 grade 2 grade 3 देख इसमें देख grade 1 grade 2 grade 3 तो NEC will be as per adenocarcinoma of the pancreas अगर आप pancreas की बात करते हैं तो ठीक है so एक ये दूसरा WHO का WHO ने स्टेजिंग नहीं दिया WHO ने नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन दिया आप कैसे गैस्ट्रोएंटेरोपैंक्रियाटिक NETs को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें उसने NET NEC और MINEN बोला ठीक है तो ये दोनों याद रखने हैं अपने को उसके अलावा वर्कअप में याद रखना देयर आर सम नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स देयर आर सम स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स तो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर आपके पास फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के हिसाब से रहते हैं इंसुलिनोमा ग्लूकागोनोमा इनके हिसाब से और नॉन फंक्शनल के अंदर आपको स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स नहीं मिलेंगे नॉन फंक्शनल के अंदर आपको जनरल ट्यूमर मार्कर्स एलिवेटेड मिलेंगे जो जनरल फंक्शनल के अंदर भी एलिवेटेड होंगे तो वो जनरल आर specifically those general are for the neuroendocrine component so that is chromogranin A NSE and उसके अलावा बस इतने ये दोनों है उसके अलावा आपके पास साइनेप्टोफाइजिन होता है साइनेप्टोफाइजिन इज नॉट अ ट्यूमर मार्कर इट इज एन IHC मार्कर ठीक है सो ट्यूमर मार्कर में सीरम CGA एंड सीरम NSE तो CGA is all three it is a predictor of disease burden it is a predictor to it is used for prognosis कि भाई अगर हाई है तो प्रोग्नोसिस बुरा है और रिकरेंस में भी आपको पहले CGA ही राइज होगा एंड तीसरा है रिस्पांस इवैल्यूएशन बिकॉज एज व्हेन यू आर गिविंग द ट्रीटमेंट इट शुड टेक्निकली रिड्यूस तो प्रेडिक्टर रिस्पांस इवैल्यूएशन एंड प्रोग्नोस्टिक फॉल्स पॉजिटिव CGA का है उसमें आप CGA मेजर करते हो तो PPIs बंद करने हैं आपको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस IBD रीनल फेलियर लिवर सिरोसिस HCC पैंक्रियाटिक कैंसर इसके अंदर भी CGA हाई हो सकता है सो रिमेंबर दिस CGA इज अ स्पेसिफिक मार्कर ठीक है अपन ने पढ़ा था ना उसके अंदर ये स्टैट्स के अंदर स्पिन एंड स्नाउट वाज spin was specific and specific for rule in and snout sensitive for rule out तो स्पिन क्या है स्पिन इज फॉर रूल इन ठीक है तो अगर क्रोमोग्रानिन हाई है तो यू आर डेफिनेटली श्योर इट इज अ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ठीक है सो दैट इज हाउ यू रिमेंबर तो क्रोमोग्रानिन बहुत सारी चीजों में बढ़ता है बट अगर वो बड़ा है तो यू आर श्योर इट इज न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर व्हेन यू आर इन डाउट आपको CGA देखने को मिल सकता है So in patients with poorly differentiated G3 grade 3 CGA is often normal because they are poorly differentiated so they lose their neuroendocrine component so they refuse to secrete chromogranin A and in those scenarios neuron specific enolase can sometimes be of value general marker ठीक है IHC के अंदर आप synaptophysin and chromogranin A करते हो वो भी आएगा बाद में so as far as workup is concerned tumor marker देखना है आपको tumor marker में it can be फॉर फंक्शनल फॉर नॉन फंक्शनल के अंदर जनरल ट्यूमर मार्कर बढ़ेगा विच इज क्रोमोग्रानिन A एंड न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस और फंक्शनल के अंदर बाकी सारे बढ़ जाएंगे जो अपने फंक्शनल NETs हैं उसके हिसाब से फिर आता है स्कैन द फर्स्ट स्कैन इज ऑलवेज CT ठीक है CT एंड EUS एंड डोटाटेड पेट तो CT इज यूजुअली द फर्स्ट स्कैन उसमें सब दिख ही जाता है अनलेस इट इज अ वेरी स्मॉल लीजन और सब मिलीमीटर सब सेंटीमीटर लीजन most commonly used and mandatory imaging tool for localization and characterization. EUS is for subcentimetric lesions and also used for gastric and pancreatic NETs. It can be also used for cytology and biopsy to establish a tissue diagnosis. And तीसरा है आपका DOTA-TET PET and FDG PET. ये दोनों important है. DOTA-TET में आप ऑक्ट्राइड यूज करते हो and FDG के अंदर आप नॉर्मल अपना FDG ग्लूकोज यूज करते हो सो ऑक्ट्राइड विल ऑब्वियसली गो टू दोस जहां पे सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर प्रेजेंट हैं एंड FDG इज आल्सो sensitive towards somatostatin receptors but not as much as DOTA-TET तो इन दोनों का यूज है वो आई टेल यू वो एक्चुअली NCCN के अंदर भी दिया है लोग ने ठीक है तो सोमैटोस्टैटिन 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं 1 to 5 दे आर लिंक्ड टू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेनिक रिसेप्टर्स लिंक्ड टू सेल मेम्ब्रेन G proteins over expression in NETs forms the basis of SSTR based imaging 5 types 2 and 5 are the most abundant उसमें अपने को यूजफुल मेनली 2 है PET CT scan with the analog that is DOTA-TET
एंड एफडीजी दोनों ही एसएसटीआर को क्या बोलते हैं रिसेप्टिव हैं. With increasing proliferation index as measured by the MIB, SSTR expression decreases. ठीक है, because जैसे ही Ki67 बढ़ रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है, पुअर डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है, तो वो न्यूरोएंडोक्राइन अपना लीनिएज छोड़ रहा है. That is why you are not able to have a lot of chromogranin A also, and same reason you are not able to have SSTR expression also. So in those cases, FDG PET will be of better use. So with increasing proliferation, SSTR expression decreases, tumors may not have uptake on SSTR imaging. In such situation, FDG PET, normal अपना FDG PET जो होता है, that is useful. So FDG uptake increase होता है, तो loss of differentiation का technically एक marker है. In well differentiated neuroendocrine tumors, DOTA TET scan will show uptake. FDG will not show that much uptake. In poor differentiated, FDG उल्टा हो जाएगा. FDG will show uptake, DOTA TET will show less uptake. ये याद रखना. ये switch switch जो होता है, poorly differentiation है और आपने उसको थेरेपी पे चालू किया, एनालॉग्स में या एवरोलाइमस में या व्हाटएवर आपने चालू किया है, तो आप थेरेपी दे रहे हो और ये स्विच अगर आपने देखा 6 महीने के बाद, दैट मींस योर थेरेपी इज टेक्निकली वर्किंग. ठीक है, ये एनसीसीएन ने दिया है, इसीलिए इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट लगा. मतलब ये मुझे एक्चुअली नहीं मालूम था, इसीलिए. सो ये रहा फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना. इसको ही फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. हाँ, तो ये याद रखना, ये एनसीसीएन ने भी दिया है. मतलब हाई ये पहले डोटा मुझे लगा टेट एंड डाटा लो वालों के पास एफडीजी अपटेक इन वेल डिफरेंशिएटेड एंड ऑपोजिट इन पुअरली डिफरेंशिएटेड. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस आल्सो वी नो, इंसुलिनोमा के अंदर एसएसटीआर रिसेप्टर्स कम रहते हैं. सो एसएसटीआर रिसेप्टर अपटेक इज टेक्निकली नॉट सीन इन इंसुलिनोमास. वो एक याद रखना. उसका एसटीआर अपटेक. ओके, ठीक है, ये मैंने एक स्लाइड बीच में घुसा दिया है जनरल पीनेट्स का वर्कअप में. ये फ्लो चार्ट अगर जिंदगी में तुमको याद रहे तो अच्छी बात है. वैसे है लॉजिकल फ्लो चार्ट है, बट व्हाटएवर, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट. पढ़ा देते हो ना, पहले पढ़ा उसको थोड़ा एनलार्ज करके. अरे मालूम चल जाएगा तेरे को. देख, सस्पेक्टेड पीनेट है, सीटी इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो सीटी किया आपने. अगर सस्पेक्टेड पीनेट है तो सस्पेक्ट पीनेट मतलब कैसे करो, या तो नॉन फंक्शनल है या तो फंक्शनल है. अगर नॉन फंक्शनल है तो आपने सस्पेक्ट क्यों किया है? क्योंकि उसको कहीं पे तो मास दिखा है, और मास दिखा है, नॉन फंक्शनल है मतलब बड़ा मास है, तो आपने सीटी पे देख लिया. फंक्शनल है तो यहाँ तो कोई फंक्शनल सिंड्रोम के साथ आया है, मतलब गैस्ट्रिनोमा इंसुलिन वाले सिंड्रोम्स का, तो आपने उसको इमेज किया, तो उसमें भी आपको. यार ये बताओ, नॉन फंक्शनल विल यू एबल टू आइडेंटिफाई बिफोर सर्जरी? वही तो मैं कह रहा हूँ. द पेशेंट, आपने सस्पेक्ट पीनेट किया है तो उसके दो ही कारण है सस्पिशन से. वन इज इट हैज अ फंक्शनल सिंड्रोम. ठीक है, पीपल्स ट्राइड है, बहुत ही जेजुनम तक अल्सरेशंस हैं, उसको गैस्ट्रोनोमा में ऐसा है, तो दीज आर फंक्शनल सिंड्रोम्स. तो यू आर सस्पेक्टिंग अ पीनेट. व्हेन इट इज नॉट अ फंक्शनल सिंड्रोम, तब तो हम विपल्स ही कर देते हैं. विपल्स के बाद फाइनल हिस्टोपैथ पता चलता है कि भाई वो पीनेट है. वही मैं कह रहा, अगर नॉन फंक्शनल पीनेट है, radiological this one is also different, no? Non-functional pnet will present to you with symptoms which are going to present only when the size increases. अगर हेड में है तो जैसे विपल्स वाले सिम्टम्स ही आएंगे उसको, तो तुमको विपल्स कर लोगे, क्योंकि विपल्स में भी ऐसा है ना, बायोप्सी इज नॉट नीडेड इफ इट इज रिसेक्टेबल. तो आपने विपल्स कर लिया, आपको मालूम चल गया तो नॉन फंक्शनल पीनेट था. Doesn't matter. The patient came with symptoms of obstructive jaundice because of the sheer size of the NF non-functional NET. So non-functional is suspected only because of symptoms, and those symptoms, because there are no functional symptoms, those symptoms happen only when their size increases. So size increase है तो it is very likely it is found on CT. समझी? तो विपल्स का जैसा वर्कअप है, टेक्निकली इसका भी ऐसा ही वर्कअप हो गया, बिकॉज यू डोंट नो, इट इज अ नॉन फंक्शनल एंटिटी, उसको कोई सिम्टम्स नहीं. तो फर्स्ट इज ऑलवेज सस्पिशन को आपको वेरीफाई करना है. तो पेशेंट प्रेजेंटेड विद सिम्टम्स ऑफ फंक्शनल, और पेशेंट का मास फाउंड हो गया बिकॉज ऑफ इंसिडेंटल इमेजिंग फॉर अदर रीजन, और बिकॉज ऑफ ही हैड सिम्टम्स बिकॉज ऑफ साइज. तो अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग है तो आर द सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद फंक्शनल? लेट अस गो टू नो.
नो है तो नॉन फंक्शनल एनईटी है, विच इज द मोस्ट कॉमन एनईटी नॉन फंक्शनल. साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है, यस, कंसिडर ऑब्जर्वेशन वर्सेस रिसेक्शन. तो ऑब्जर्वेशन इज यूजुअली डन इन लेस देन 2 सेंटीमीटर वेदर इट इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. अगर ऑब्जर्वेशन किया, क्या वो ग्रो हुआ? अगर ग्रो नहीं हुआ तो कंटिन्यू रखो, अगर ग्रो हो गया तो रिसेक्ट करो. अगर 2 सेंटीमीटर से कम नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फंक्शन. अगर 2 सेंटीमीटर के ऊपर है तो आप मेटास्टेटिक वर्कअप करो, वो भी आपका सीटी और पेट में आ जाएगा. अगर मेटास्टेसिस नहीं है तो आप सर्जिकल रिसेक्ट कर दो, बिकॉज लोकलाइज डिसीज है. अगर मेटास्टेटिक डिसीज है तो यू कंसिडर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड डीबल्किंग ऑफ मेटास्टेटिक डिसीज, सो दैट यू कैन, डीबल्किंग का इसमें रोल है. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक साल पहले मैंने पीपीटी बनाया था जो 1-1.5 साल पहले, उसमें मैंने 70% लिखा था. डीबल्किंग इफ 70% पॉसिबल यू कंटिन्यू. अभी एनसीसीएन बोलता है 90%, ये याद रखो. ठीक है. सो 90% अगर डीबल्किंग पॉसिबल है तो यू गो फॉर सर्जरी इन अ मेटास्टैटिक सेटिंग. इन और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल यू गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स, because that is how the patient presented. ठीक है. So suspected NET found on CT, it is a non-functional है तो साइज देखो, साइज 2 से कम है तो ऑब्जर्व करो, कभी भी बढ़ गया तो रिसेक्ट करो. साइज 2 से ज्यादा है तो मेटास्टेटिक है कि नहीं वो देखो, मेटास्टेटिक नहीं है तो रिसेक्ट करो, मेटास्टेटिक है तो पैलिएटिव नहीं बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो एंड डीबल्किंग सर्जरी करो. उसके बाद भी आप ट्रीटमेंट चालू रख सकते हो. तो डीबल्किंग करने का क्राइटेरिया क्या है? 90%. अगर पेशेंट को फंक्शनल एनईटी है तो फंक्शनल एनईटी को आप फर्दर कैरेक्टराइज कैसे करोगे? आप उसको लोकलाइज करोगे, बिकॉज नाउ यू नो द पेशेंट हैज अ एनईटी, उसको आप लोकलाइज करोगे. लोकलाइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सीटी. सीटी में लोकलाइज नहीं हुआ तो यूएस में लोकलाइज नहीं हुआ तो एंजियोग्राफी में लोकलाइज नहीं हुआ तो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, और कहीं पर भी लोकलाइज हो गया तो रिसेक्ट कर दो उसको. सिंपल है. सो चार्ट इतना कुछ बड़ा नहीं है, वो अपना नॉर्मल लॉजिकल ही है, बट ये बहुत सारे एरोज हैं इसलिए. ठीक है. तो यू हैव ट्यूमर मार्कर्स, यू हैव स्कैनिंग्स एंड यू हैव IHC, बिकॉज व्हेन यू इफ यू टेक अ बायोप्सी, सो बायोप्सी में अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ट्यूमर मार्कर में क्रोमोग्रानिन ए था और न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस था. IHC के अंदर क्रोमोग्रानिन ए है, साइनेप्टोफाइसिन. तो यहाँ पे देख लो, क्रोमोग्रानिन है स्पेसिफिक मार्कर है. रिमेंबर, स्पिन इज रूल इन. सो व्हेन यू आर इन डाउट, इसका पॉजिटिविटी इज a short sign of neuroendocrine tumor, but poorly differentiated के अंदर NECs may not express the chromogranin. In that case synaptophysin comes into picture. Synaptophysin was highly sensitive मतलब रूल आउट कर सकते हो, बट हाईली सेंसिटिव मतलब वो हर चीज को पिकअप करेगा ना. तो synaptophysin is highly sensitive marker but lacks specificity and therefore can be positive in other tumors also. ठीक है. सो IHC के अंदर क्रोमोग्रानिन ए एंड साइनेप्टोफाइसिन, एंड ट्यूमर मार्कर के अंदर क्रोमोग्रानिन ए एंड न्यूरॉन स्पेसिफिक एंड इनोलेस. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अपन ने बता ही दिया. नॉन फंक्शनल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज दे प्रेजेंट, एंड फंक्शनल दे प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द हार्मोन. तो ये मैंने एक बीच में और घुसा दिया, ये सब मैं जगह को कवर करने को करता रहता हूँ. सो एक्सटेंट ऑफ द सर्जरी, व्हाट शुड बी द सर्जरी. NCCN एंड हर जगह लिखा है this has to be resected as per with wide excision plus lymph node dissection. ठीक है. pnets whether they are functional or non-functional should be resected with a wide margin plus lymph node dissection unless it is a very small insulinoma which can be enucleated, but enucleation के अंदर lymph node dissection नहीं होता, or it is a very small pnet in duodenum or rectum जहाँ पे आप endoscopic resection कर सकते हैं. These are the only couple of areas where you can leave out lymph nodes. Other than that, for all practical purposes lymph node dissection plus wide excision has to be done. Size criteria is 2 centimeter for both neuroendocrine, non-functional and functional. So the surgery can be parenchyma sparing, which is central, or enucleation. It can be demolitive, which is anatomical. So anatomical is total pancreatic, distal pancreatic with splenectomy and pancreatoduodenectomy. अभी ये इसने बहुत अच्छा टेबल दिया है. किसने दिया है? ये टाटा ने. 2 पेज का टेबल है भाई ये.
अच्छा है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ अगर ये तुमको इन जनरल इंसुलिनोमा पूछ, अगर कुछ ऐसे ही पूछ लिया ना तो ये कैसे दिखाऊं मैं तुमको? नहीं हो रहा क्या रोटेट? नहीं हो रहा ना। तुझे दिख जाए तो मुझे बताना, तो मैं फिर पढ़ाता हूँ। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? टेढ़ा इसको वैसा ये चाहिए। बराबर दिख रहा है क्या? नहीं 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 दिख रहा है, इसको राइट एंगल करो। अभी दिख रहा है? रोटेट रोटेट। अभी दिख रहा है? मेरे ख्याल से वो उसी दिन जैसा हो रहा है ना, रोटेट नहीं हो रहा था। तो तुमको लैंडस्केप नहीं हो रहा है वो। मैं ये कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ, रुक मैं करता हूँ। ठीक है, नहीं आओ, ये टेबल अपने पास है टाटा की किताब में, तो ऐसी कुछ खास नहीं है। इंसुलिनोमा इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन पीनट लिखा है, इट इज रॉन्ग। मोस्ट कॉमन फंक्शनल पीनट इज इंसुलिनोमा, मोस्ट कॉमन पीनट इज नॉन फंक्शनल। इंसुलिनोमा सबसे अच्छा पीनट है। 90% solitary, 90% benign, 90% sporadic, 90% amenable to resection, 90% less than 2 centimeter, only 10% incidence with men1। men1 के अंदर मोस्ट कॉमन पीनट क्या है? अगेन नॉन फंक्शनल। men1 के अंदर मोस्ट कॉमन फंक्शनल ये पीनट क्या है? हाइट कर ना, हाइट कर आइकन। ठीक है, सो फीचर्स वी नो विपल्स ट्रायड है। विपल्स ट्रायड क्या है? अटैक्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, तब ब्लड शुगर लेस देन 50 होता है एंड सिम्टम्स आर रिलीव्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। सिम्टम्स क्या रहते हैं? न्यूरोलॉजिकल, वासोमोटर, बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। डायग्नोसिस में क्या रहता है? गोल्ड स्टैंडर्ड 72 आवर फास्टिंग, उसमें आपको हाई इंसुलिन लेवल, हाई सी पेप्टाइड लेवल, एब्सेंस ऑफ सल्फोनाइल यूरिया एंड फंक्शन इमेजिंग आपको करना है, जिसमें अगर आपको नहीं मिला तो ईयूएस करना है, उसके अंदर भी नहीं मिला तो इंट्राऑप आईओयूएस करना है, वो भी नहीं मिला तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक अ पैंक्रियाटिक बायोप्सी टू रूल आउट NIPHS, ऐसा कुछ था ना, नॉन इंसुलिनोजेनिक पैंक्रियाटिक हाइपरप्लेजिया, ऐसा कुछ था। ठीक है, बट ब्लाइंड रिसेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड इन इंसुलिनोमा अनलेस डायग्नोस्ड विथ इंसुलिनोमा, ये याद रखना। तो इंसुलिनोमा का लोकलाइजेशन बहुत तकलीफ वाला है। स्कैन में नहीं मिला, ईयूएस में नहीं मिला, एंजियो एम्बोलाइजेशन में नहीं मिला, इंट्राऑप यूएसजी में नहीं मिला, पाल्पेशन में नहीं मिला, तो आप बायोप्सी लो, उसमें भी अगर NIPHS नहीं आया, उसमें भी इंसुलिनोमा नहीं आया, तो ब्लाइंड रिसेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड इन इंसुलिनोमा, ये थंब रूल है। ठीक है, तो ये इंसुलिनोमा हो गया। गैस्ट्रोनोमा में वी नो 80% इन गैस्ट्रोनोमा इज ट्रायंगल, सेकंड मोस्ट कॉमन फंक्शनल पीनेट, 60% मैलिग्नेंट, 50% मल्टीफोकल, Zollinger-Ellison syndrome, सीरम गैस्ट्रिन मोर देन 1000, सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट कर सकते हो अगर इक्वियोकल गैस्ट्रिन लेवल है तो, and basal acid output has to be more than 15. In gastrinoma you have to rule out hypergastrinemic conditions which can happen in, for example, PPI use। ठीक है, तो वो सारी hypergastrinemic with low gastric acid output conditions को rule out करना है। वो सैबिस्टन में शायद टेबल है, आई डोंट रिमेम्बर मैंने यहाँ पे डाला है कि नहीं। तो you have to have a high level of gastrin and a high level of acid output। ठीक है, सो बेसल एसिड आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, पीएच कम होना चाहिए और सीरम गैस्ट्रिन ज्यादा होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए, हाइपर गैस्ट्रिन, इंक्रीज्ड एसिड, लेस पीएच बिकॉज इट इज एसिड। सॉलिटरी लीजन में सर्जरी विद लिम्फ नोड, मल्टीफोकल लीजन के अंदर इन्यूक्लिएशन ऑफ लीजन्स मोर देन 2 सेंटीमीटर विद लिम्फ नोड्स। इंट्रैक्टेबल सिम्टम्स को आप दोगे सोमैटोस्टैटिन थेरेपी या फिर मल्टीपल पीपीआईज और इवेंचुअली पेप्टाइड रेडियो रिसेप्टर न्यूक्लियाइड थेरेपी। ग्लूकागोनोमा अगेन बॉडी एंड टेल, रेयर। ग्लूकागोनोमा के अंदर 4D याद रखना है, डायबिटीज, डर्मेटाइटिस, डीवीटी एंड डिप्रेशन। डर्मेटाइटिस कौन सा रहता है? नेक्रोलाइटिक माइग्रेटरी एरिथमा। ठीक है, ग्लूकागोन लेवल मोर देन 1000, रिसेक्टेबल को सर्जरी, अनरिसेक्टेबल को अगेन the normal treatment, that is PRRT or systemic therapy which consists of somatostatin analogs। somatostatinoma also very rare। somatostatinoma में क्योंकि ये नहीं हो रहा तुम्हारा फैट
एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, बिकॉज सोमैटोस्टैटिन इज गोइंग टू कॉज रिड्यूस्ड बाइल सिक्रेशन आल्सो, तो सब कुछ बढ़ जाएगा। कोलेलिथियासिस, स्टियाटोरिया एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डायरिया बिकॉज ऑफ सिक्रेटरी डायरिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया, डायरिया आल्सो बिकॉज ऑफ स्टियाटोरिया। ठीक है, सो सोमैटोस्टैटिन लेवल्स मोर देन 160, सर्जरी अगेन सेम, debulking because most of them present with metastasis or somatostatin analogs। वीआईपी के अंदर सेम WDHA सिंड्रोम याद रखना है, सिक्रेटरी डायरिया याद रखना है एंड सेम ट्रीटमेंट। तो ये आपके सिंड्रोम्स हैं। ये मैंने लाइन क्यों रखी है, अब मेरे को बताना वापस, ना वापस ठीक हुआ तो मैं, ये ठीक हो गया वापस, ये दिख रहा है अच्छे से वापस नॉर्मल। साना सो गई, साना गई होगी मूवी, साना नहीं सॉरी सोमिता, सोमिता सो गई क्या? दिख रहा है दिख रहा है ना, ठीक। मूवी गई होगी साना। अरे तेरा नाम बोलना था, वो साना का नाम निकल गया। ठीक है, तो स्मॉल, तो ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मुझे इसमें क्या हाईलाइट करना था। हाँ, नॉन फंक्शनल पीनेट्स का एनसीसीएन बोलता है लेस देन 2 सेंटीमीटर मे बी सिलेक्टिवली ऑब्जर्व्ड, स्पेशली लेस देन 1 सेंटीमीटर इंसिडेंटल एंड लो ग्रेड, मोर देन 2 सेंटीमीटर रिसेक्ट करना है। और ये लिम्फेडेनेक्टोमी के लिए लिखा था मैंने। एनसीसीएन बोलता है 1 to 2 सेंटीमीटर हैव अ स्मॉल बट रियल रिस्क ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, लिम्फ नोड रिसेक्शन शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, सो इन्यूक्लिएशन में लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं होता, तो अगर हाई ग्रेड है तो लिम्फ नोड डिसेक्शन कंसिडर करो, बट मोर देन 2 हमेशा करना ही है। ठीक है, सो देन वी कम टू कार्सिनॉइड सिंड्रोम एंड कार्सिनॉइड, बिकॉज ये अपन ने अपना फ्लो कैसा था, फ्लो वॉज, पहले आपने क्लासिफिकेशन देखा WHO का एंड AJCC का, देन आपने इवैल्यूएशन देखा, ट्यूमर मार्कर, स्कैन्स एंड IHC। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर वही है, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल साइज के हिसाब से जाएगा, फंक्शनल सिंड्रोम के हिसाब से जाएगा। उसके बाद अपन ने, बिकॉज सारे फंक्शनल वालों का अपन ने इन जनरल ऊपर से मोटा मोटी, यू वांट टू डू बट इट शुड बी डन बिफोर प्रोसीडिंग विद सर्जरी। दूसरा, व्हेन यू आर प्रोसीडिंग विद सर्जरी, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है ड्यू टू कार्सिनोइड क्राइसिस, सो इसके लिए सर्जरी के पहले हमेशा प्रोफाइलैक्टिकली आपको ऑक्ट्राइड देना है। 250 to 500 microgram sub-Q 1 to 2 hours before surgery is recommended to avoid the crisis। ठीक है, ये मैनेजमेंट इसका नहीं है, ये मैनेजमेंट जनरल पैंक्रियाटिक GEP NETs का है। तो you have local management which is surgery, you have systemic management which is PRRT, somatostatin analogs and you have chemo। हमेशा पहले ये देते हैं, उसके बाद ये यही। ठीक है, सो वेरियस मोडालिटीज आर अवेलेबल, नहीं है बस टेबल बनाते तो लोगों को अच्छा लगता है। तो पैंक्रियाटिक नॉन फंक्शनल लेस देन 2 सेंटीमीटर, all good things, grade 1 or early grade 2 asymptomatic, surveillance is an option like we just said, more than 2 centimeter surgery, small intestine में हमेशा सर्जरी करना है, डिओर्डनम में लाइक जैसा मैंने कहा था लेस देन 2 सेंटीमीटर सर्वेलेंस या एंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हो, सेम चीज रेक्टम के अंदर भी आता है, एंड मोर देन 2 सेंटीमीटर में सर्जरी। तो ये आपका प्राइमरी मैनेजमेंट है। नॉन मेटास्टैटिक, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड ग्रेड, योर प्राइमरी मैनेजमेंट विल बी मोटा मोटी इधर ऑब्जर्वेशन, एंडोस्कोपिक रिसेक्शन फॉर डिओर्डनम एंड रेक्टम, और basically observation or surgery depending on size, grade, symptoms for a non-metastatic lesion. The moment it becomes grade 3 neuroendocrine tumor, you go for systemic therapy. The moment it becomes neuroendocrine carcinoma, you go for systemic therapy. The moment it becomes grade 1, grade 2 hai, but it is metastatic, that means you are not going to be able to remove, you are not going to be able to have a negative margin, then you see if at least you can debulk। अगर debulk भी करने का श्योरिटी नहीं है आपके पास, तो again debulking is possible। no, grade 2 है तो go for systemic therapy, grade 1 है तो
सिम्टोमेटिक है तो गो फॉर सिस्टमिक थेरेपी, सिम्टोमेटिक नहीं है तो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये दो टेबल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि दिस इज नॉन मेटास्टैटिक रिसेक्टेबल अगर है, देन दिस इज द टेबल, दैट इज आप साइज और ग्रेड के हिसाब से एंड प्लस सिम्टम्स है कि नहीं उसके हिसाब से आप सर्जरी डिसाइड करते हो। अगर मेटास्टैटिक है या फिर ग्रेड 3 है, फिर वो NET है या NEC है, या फिर इतना लोको रीजनली एडवांस्ड है कि आप मेटास्टैटिक नहीं है फिर भी R0 रिसेक्शन नहीं कर सकते, इन ऑल दोस केसेस यू गो फॉर systemic therapy. And when it is not possible to do debulking but the patient is not symptomatic, in that case you can still observe but you are not going to resect, because if it is not possible to do more than 90% debulking, there is no point in doing it anyway. ठीक है, एंड सिस्टमिक थेरेपी जैसा मैंने बोला यूजुअली एनालॉग्स पहले रहते हैं, उसके बाद PRRT, बाकी कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। तो ये दो टेबल इंपॉर्टेंट है, ये दो टेबल जरूर याद रखना। So, like we said, first table, treatment of localized or loco-regional disease. Surgery is the mainstay. Smaller and lower grade gastroduodenal rectal entities can be treated with endoscopic. We said that. Incomplete endoscopic resection or recurrence following such a conservative क्यों? Because endoscopic में आप lymph node dissection नहीं कर रहे हैं. So, they need to be treated with more radical oncologic resection. Non-functional, more than 2 cm, formal oncologic resection. Incidentally detected non-function less than 2 cm, we all know there is no need to resect. Incidental है मतलब symptoms नहीं है, so observe. Choice of surgery क्या है? Like ये उसने in general सबका दे दिया क्योंकि वो टेबल के अंदर उसने सब कुछ कवर किया था। जेजुनम एंड प्रॉक्सिमल आइलियम के अंदर आप वाइड एक्सिजन विद लिम्फ नोड करते हो एडिनोकार्सिनोमा के जैसे। डिस्टल आइलियम के अंदर आप राइट हेमिकोल करते हो। अपेंडिक्स के अंदर लेस देन 1 है तो आप अपेंडिसेक्टोमी करते हो, बेस फ्री है टिप पर है तो। अपेंडिक्स के अंदर और कहीं पर कुछ भी है तो यू डू अ राइट हेमिकोल वेयर डीबल्किंग इज नॉट पॉसिबल टू मोर देन 90% और अ रिकरेंट ट्यूमर। फॉर ऑल these advanced disease you have to go for systemic therapy. So systemic therapy remains the cornerstone in the management of advanced metastatic or recurrent NETs. Options क्या है? Number 1 ऑप्शंस ये आपके पास 3 है, PRRT, इंटरफेरॉन, ये टारगेट थेरेपी में इवेरोलाइमस, सोनिटिनिम, बिवासिजुमाब, और ये तो 4 ऑप्शन थे अपने पास, PRRT, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये 4 ऑप्शन वो टेबल के अंदर दिए थे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी हियर? The main objective of such tumor is to have symptom control and prolongation of survival. तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूजुअली ऑक्ट्राइड। कौन सी स्टडी थी? प्रोमेट। लैंड्रोटाइड का स्टडी का नाम क्या था? क्लैरिनेट। ये पूरे चैप्टर के अंदर 4 स्टडी याद रखनी है अपने को, मैं बताता हूँ। ये प्रोमेट, क्लैरिनेट, दूसरा है रेडियंट 4 और तीसरा है चौथा एक और था। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी इन दिस मेटास्टैटिक लोकली एडवांस्ड डिसीज व्हेन यू आर टॉकिंग जस्ट अबाउट सिस्टमिक थेरेपी? तो सर्जरी का रोल क्या है? सर्जरी का रोल क्या पर है? इन डेफिनेट सर्टेन सिचुएशंस, 2 सिचुएशन आप मान लो, एक जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द NET, दैट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या मेजेंट्री पे डिसीज है जिसके कारण क्लोज टू द मेजर वेसल है, तो इन ऑल दोस केसेस यू कैन डीबल्क इवन इफ इट इज गोइंग टू बी लेस देन 90%, एटलीस्ट यू कैन डीबल्क, यू कैन डू अ पैलिएटिव डीबल्किंग सर्जरी just to reduce the symptoms. And दूसरा है liver, just to reduce the possible complications. Symptomatic reduction के लिए liver, for example, liver directed therapy है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, embolization, TACE, TARE सब कर सकते हैं, but symptomatic proper therapeutic अगर आपको करना है तो more than 90% debulking करना पड़ेगा। less than 90% सर्जरी आप कर रहे हो debulking, तो उसका रोल क्या है? ये दोनों, ठीक है, to reduce the load and to prevent the possible complications that may happen because of the growing or the size of the tumor. So coming to somatostatin analogs, आपके पास ये 2 हैं, ये स्टडी याद रखनी है अपने को, एक कर्नसेटाल की, एक नेटर भी याद रखना है अगर रख सके तो, रेडियंट, क्लैरिनेट, प्रोमेट, सिर्फ नाम याद रखना है, थियरी में तो इतना ही काफी है, ठीक है। सो प्रोमेट स्टडी ने पहली बार ऑक्ट्राइड बताया, लॉन्ग एक्टिंग रिलीज का। क्लैरिनेट ने बोला, उसने प्रोमेट ने देखा कि PFS एंड OS में फर्क है। क्लैरिनेट ने लैंड्रियोटाइड वर्सेस ऑब्जर्वेशन कंपेयर किया, उसने भी सेम चीज बोली। ऑक्ट्राइड वर्सेस लैंड्रियोटाइड का कोई कंपैरिजन है नहीं है, ठीक है। सो करंटली देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट सुपीरियरिटी ऑफ ऑक्ट्राइड ओवर लैंड्रियोटाइड एंड वाइस वर्सा।
So that was somatostatin analog. Then you पर come to लैंडियोट्राइड आई थिंक लॉन्ग एक्टिंग होता है और ऑक्सीट्राइड शॉर्ट एक्टिंग, yes, तो इसलिए लैंडियोट्राइड इज लॉन्ग एक्टिंग, बट दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है, बट लैंडियोट्राइड इज लॉन्ग एक्टिंग, उतना ही उसका फायदा। ठीक है, इसको 3 वीक्स में या कितने वीक्स लैंडियोट्राइड को कैसे लगा? आई थिंक वन मंथ है, 28 डेज मंथली रहता है, 4 वीक्स। ठीक है, देन यू कम टू सेकंड ऑप्शन व्हिच वाज कीमोथेरेपी। सो सबसे पहला कीमोथेरेपी रेजिमेन सिस्प्लाटिन इटोपोसाइड एस्टैब्लिश। दुनिया के कोई भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो सबका सिस्प्लेटिन इटोपोसाइड कीमो रहेगा। उसके बाद आपने सेकंड लाइन में देखा फॉलफॉक्स, फॉलफिरी, फॉलफिरीनॉक्स, और उसके बाद ये कॉन्सेटॉल ने स्टडी किया, ये भी अभी एनसीसीएन में आ गया है, कैपेसिटामीन प्लस टीमोजोलेमाइड वर्सेस टीमोजोलेमाइड अलोन। तो इसमें कैपेसिटामीन प्लस टीमोजोलेमाइड का रोल अच्छा था। ठीक है, तो ये स्टडी इसलिए मैंने बोला याद रखना। टीमोजोलेमाइड कौन सा है? टीमोजोलेमाइड उसमें देते हैं यार, मेरे को इतना मालूम है, खाली जीबीएम वगैरह में देते हैं, ब्रेन में, ग्लायोमा में देते हैं। हाँ। ये उसमें आता है एंटी मेटाबोलाइट्स होती है ना, जो उसमें उसका पार्ट होता है टेमोजोलामाइड, जो ये पुराने वाले थे ना एंटी मेटाबोलाइट, जो सबसे पहले वाले एंटी कैंसर ड्रग्स थे, उसमें एक क्लास है टेमोजोलामाइड। ठीक, तो ये आपका आ गया कीमो। ये मैंने क्या डाला है, हाँ ये मैंने ऊपर से सिर्फ ऑक्ट्राइड और लैंडियोट्राइड के ऊपर सवाल आ गया तो ये पढ़ लेना, ये मेरी पहले की स्लाइड्स थी। तो प्रोमिड स्टडी, क्लैरिनेट स्टडी, टारगेटेड थेरेपी में एमटॉर इनहिबिटर्स एंड पीआरआरटी। ठीक है, सुनिटिविन, इवेरुलिमस एंड इट्रियम 90 एंड 177 लुटेशियम का पीआरआरटी। ये शायद दिशिता वाली स्लाइड से है। इवेरोलाइमस की स्टडीज कौन सी थी? रेडियंट, ऑल आर रेडियंट स्टडीज। ठीक है, रेडियंट 1 वाज अ phase 2, रेडियंट 3 लार्जेस्ट आरसीटी टू डेट इन पैंक्रियाटिक एनिटीज, इवेरोलाइमस वर्सेस प्लेसिबो, 11 months वर्सेस 4 months का सर्वाइवल बेनिफिट था। रेडियंट 4 वाज अगेन फॉर इवेरोलाइमस, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ का देखा था उन्होंने इन पेशेंट्स विद पल्मोनरी एंड जीआई एनिटीज। तो अपने को रेडियंट स्टडी याद रखनी है इवेरोलाइमस के लिए। सो क्लैरिनेट, प्रोमिड एंड इवेरोलाइमस। पीआरआरटी के लिए आपके पास नेटर स्टडी था, वो भी यहाँ पे दिया है एक्चुअली इसमें, यहाँ पे। ठीक है, सो ये नेटर भी याद रखना। सो नेटर स्टडी में क्या उसने कंपेयर किया, पीआरआरटी दिया, उसके बाद ऑक्ट्राइड भी दिया। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया विथ सिंगल ओनली ऑक्ट्राइड 60 मिलीग्राम मंथली। सो 30 मिलीग्राम ऑक्ट्राइड विथ पीआरआरटी वर्सेस 60 मिलीग्राम ऑक्ट्राइड ओनली। तो उसने देखा कि ये वाले आर्म का रिजल्ट अच्छा था। रोबस्ट पीएफएस बेनिफिट इन द पीआरआरटी आर्म अमंग पेशेंट विद मिड गट एनिटीज। तो ये स्टडी कौन सी है मुझे नहीं पता। तो बेसिकली इस पे एफडीए ने अप्रूव कर दिया लुटेशियम डोटाडाइट फॉर पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स एज अ पार्ट ऑफ दिस रेजिमेन। ठीक है, सो अपन ने जो पढ़ा ऊपर भी वही, रेडियंट 3 other studies also for everolimus, radiant 2 and radiant 4. Sunitinib is the other tyrosine kinase targeted therapy. Usually both evero and sunitinib are commonly used after progression of analogs and chemotherapy. PRRT क्या है जो अपन ने पढ़ लिया, इट्रियम एंड लुटेशियम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इनका ये भी कहीं पे नीचे लिखा है मैंने, इन दोनों को चालू करने के पहले, हाँ इसके ऊपर अलग से सवाल आया। तो ये जो सवाल आया ना वो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एनसीसीएन में पूरा पीआरआरटी का उसने 2 पेज का पूरा भर के दिया है, ये रहा। तो ये पूरा 2 पेज का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये कर दिया है, लिख दिया है क्यों। तो ये अगर स्पेसिफिकली पीआरआरटी पे सवाल एक आया है एक बार, तो एक या 2 बार, आई डोंट नो, तो ये आप इतना लिख सकते हैं। उसमें ये बहुत अच्छे से कवर किया है। लुटेशियम 177 एंड इट्रियम 90। ठीक है, पीआरआरटी ऑब्वियस सी बात है कब देंगे, जब एसएसटीआर पॉजिटिव होगा। किसको देंगे? ऑल अडल्ट पेशेंट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स मोर देन 12 इयर्स। कब देंगे? मतलब डिसीज कैसा होना चाहिए? मेटास्टैटिक। ओके, हाँ दूसरा ये याद रखना, एनसीसीएन में लिखा है कि एडजुवेंट ट्रीटमेंट, मतलब रिसेक्टेबल डिसीज है आपका,
ठीक है ना, आपने वो जो पूरा फ्लो चार्ट था डायग्नोसिस में, लोकल डिसीज है, रिसेक्टेबल है, आपने रिसेक्ट कर दिया, तो क्या हर रिसेक्टेबल डिसीज को पूरा जो आपने हिस्टोपैथ देखा, ग्रेड देखा, सब कुछ देखा, अगर सब कुछ खराब है पर आपने R0 रिसेक्शन किया है, तो क्या उसमें एडजुवेंट थेरेपी का रोल है? कोई रोल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिसेक्टेबल डिसीज R0 रिसेक्शन प्रॉपर किया, आपने रिपल्स कर दिया, पेशेंट ठीक है, उसके बाद क्या आप एडजुवेंट दोगे क्या? तो एडजुवेंट में आप क्या दे सकते हो? ऑक्ट्राइड दे सकते हो 6, 8, 10, 12 महीने के लिए, हाँ कि ना? आई डोंट नो, देयर इज नो रोल। PRRT दे सकते हो प्रोफाइलैक्टिकली? नो आइडिया, देयर इज नो रोल। सो कोई एडजुवेंट थेरेपी का रोल नहीं है। सर्जरी इज द ओनली मोडालिटी। जो भी सिस्टमिक मोडालिटीज का कंपैरिजन हुआ है अभी तक, वो सब उसमें हुआ है जहां पे सर्जरी वाज नॉट एन ऑप्शन और इट वाज नॉट डन। ठीक है, सो पोस्ट सर्जरी देयर इज नो ड्यूअल थेरेपी, देयर इज ओनली वन थेरेपी। पोस्ट सर्जरी इट इज द ओनली थेरेपी। सर्जरी वर्सेस सर्जरी प्लस एडजुवेंट का कोई ट्रायल नहीं है। सर्जरी वर्सेस सर्जरी प्लस एडजुवेंट का ट्रायल नहीं है, ये याद रखना। तो ये सवाल क्योंकि आएगा, अगर कभी दिमाग में पढ़ते वक्त आएगा कि ये अपन अभी कर रहे हैं, उसके बदले पहले ही कर देते हैं, सर्जरी करने के बाद कर लेते अगर मिल रहा है तो। नहीं, ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, रोल ऑफ एडजुवेंट एनईटी के अंदर अभी तक प्रूवन नहीं है। ठीक है, सो अगर पीआरआरटी पे सवाल आया तो आप कब करोगे? एसएसटीआर पॉजिटिव है, मेटास्टैटिक एंड लोकली एडवांस्ड डिसीज है, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक मोर देन 12 इयर्स में करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? ये सब आप आंसर में 2 पेज का आंसर लिख सकते हो बराबर वाला। एलिजिबिलिटी क्या है? इट शुड बी अ वेल डिफरेंशिएटेड एनईटी, क्योंकि अपन ने देखा पुअर डिफरेंशिएटेड एनईटी या फिर एनईसी डू नॉट एक्सप्रेस सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स दैट नाइसली, सो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग एसएसटीआर थेरेपी। वेल डिफरेंट एनईटी विद एसएसटीआर एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड यू हैव टू चेक दिस। ये इसलिए ये चेक करना है क्योंकि पीआरआरटी का साइड इफेक्ट में यही सब आता है, बोन मैरो सप्रेशन, रीनल टॉक्सिसिटी, हेपेटिक टॉक्सिसिटी, यही सब आता है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू चेक दिस प्री ऑपरेटिवली। दूसरा, प्रिपेयरिंग एलिजिबल पेशेंट, दिस इज ऑल वेरी नाइसली गिवन, ये 2 पेज का आंसर बन जाएगा। तो लूटेशन देने के पहले, पीआरआरटी देने के पहले आप क्या करोगे? हाउ डू यू प्रिपेयर द पेशेंट? प्रिपेयर कैसे करना है? डू नॉट एडमिनिस्टर लॉन्ग एक्टिंग एसएसए, फॉर एग्जांपल लैंद्रियोटाइड और एलएआर ऑक्ट्राइड फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स प्रायर टू द सेशन, नंबर 1। तो पेशेंट को देना तो पड़ेगा, 4 हफ्ते तो पेशेंट सिम्टोमेटिक है ना, तभी तो आप ये सब कर रहे हो तामझाम, तो देना तो पड़ेगा। तो आप क्या दोगे? शॉर्ट एक्टिंग दोगे। शॉर्ट एक्टिंग मतलब ऑक्ट्राइड दोगे, 8 आवरली या 12 आवरली व्हाटएवर, और 6 आवरली व्हाटएवर डोज यू वांट टू गिव। सो वो डोज को भी आपको एटलीस्ट 24 घंटे पहले बंद करना है। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पेशेंट्स को रेडिएशन के बारे में काउंसिल करना है। जो अपने थेराप्यूटिक रेडियो एक्टिव आयोडीन करते हैं डीटीसी के अंदर, वैसा ही पेशेंट को रेडियो एक्टिविटी के इसके लिए भी काउंसिल करना है कि भाई रेडिएशन एक्सपोजर रहेगा, माइलो सप्रेशन हो सकता है। बाकी पीआरआरटी के क्या इश्यूज हैं? सेकेंडरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में लुकेमिया, रीनल टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड इनफर्टिलिटी, ये सब हो सकता है। पीआरआरटी इटसेल्फ कैन कॉज कार्सिनोइड क्राइसिस, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रेगनेंसी स्टेटस वेरीफाई करो एंड प्रेग्नेंट होने को मना करो। फीमेल्स को शायद 9 महीने है, मेल्स को शायद 4 मंथ्स है, ऐसा कुछ है, वो नीचे कहीं पे है। हाँ, इधर ही है, 7 मंथ्स फॉर फीमेल्स एंड 4 मंथ्स फॉर मेल। पीआरआरटी देने के, पीआरआरटी का डोज, सो यू आर कमिंग स्टेप वाइज। पहले आप किसको दे सकते हो, पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं, इन इसका सबसेट ये कि एलिजिबल को कितने हैं। उसके बाद प्रिपेयर कैसे करना है, फिर देना कैसे। देना क्या है? डोज है 200 मिलीक्यूरी 30 to 40 मिनट्स एवरी 8 वीक्स, मतलब 2 मंथली, for a total of 4 treatments. While giving PRRT, you have to give an amino acid solution. अमाइनो एसिड सोल्यूशन, अगर आपके पास कमर्शियल अवेलेबल जो अमाइनो वेन वगैरह रहते हैं, उसमें 20 अमाइनो एसिड होते हैं, उसको आपको स्टेराइल वाटर के अंदर मिक्स करके 2 लीटर का बनाना है सोल्यूशन। उसको आपको चालू करना है और एटलीस्ट 250 ml चला जाए, उसके बाद ही आपको पहला सेशन पीआरआरटी का देना है। अगर ये आपके पास अवेलेबल, ये हर जगह अवेलेबल होगा, ये इससे बेटर है आर्जिनाइन एंड लाइसिन वाला सिलेक्टिव सोल्यूशन। ये सोल्यूशन को 1 लीटर में दिया तो भी चलेगा, 250 पे दिया तो भी चलेगा, ये बेटर है, ये बेटर है। पर ये अवेलेबल नहीं है तो आपके पास कमर्शियल अमाइनो एसिड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी गिवन, पर वो 2 लीटर में डाइल्यूट करना है और 250 ml तक जाएगा, उसके बाद ही आपको पीआरआरटी देना है पेशेंट को, एंड एंटीइमेटिक प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, सो डोज ऑफ लूटेशन, अमाइनो एसिड देना है,
क्या बोलते हैं 250 ml जाएगा उतना देना है बिफोर PRRT बिगिंस एंड एंटी इमेटिक प्रोफाइलैक्सिस। अभी उसका PRRT का सेशन हो गया तो उसके बाद का आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट रेडिएशन रिस्क रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज टू बी प्रोवाइडेड। काउंट्स एक बार सब करने हैं टू सी टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ है। और दूसरा वापस से अभी पेशेंट वाज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स एंड वाज ऑन शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स व्हिच वर स्टॉप 24 आवर्स बिफोर द सेशन। तो अभी आपको वापस देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेशन तो 2 हफ्ते के बाद आने वाला है, 2 महीने के बाद। तो SSAs कैन बी एडमिनिस्ट्रेड 4 to 24 आवर्स आफ्टर ईच लुटेशियम डोटाटेट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये डिवीजन ये वो सबका। तो ये आपका PRRT पे सवाल आ गया तो ये 2 पेज लिख देना, बढ़िया हो जाएगा। 5 मार्क के सवाल में एटलीस्ट 3.5-4 तो मिल जाएंगे। ठीक है, सो PRRT का अपन ने नीचे देख लिया। टारगेट थेरेपी के ट्रायल्स मेंशन करने, उसमें ये तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, बाकी इतना एक पैराग्राफ आधा पैराग्राफ लिख देना। फॉर लिवर डायरेक्टेड थेरेपी इफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ लिवर डायरेक्टेड थेरेपी में अपने को 3-4 चीजें लिखनी है। व्हेन कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्राइम सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस। कब? अगर प्राइमरी निकाल सकते प्लस मेटास्टेरेक्टोमी कर सकते हो तो ही रिसेक्शन इज द फर्स्ट चॉइस। सो दिस इज नंबर 1, दैट इज सर्जरी। नंबर 2 क्या है? लोकल थेरेपी। इसमें क्या आ गया? टेस, टेर, RFA, माइक्रोवेव एब्लेशन। ठीक है, आज मैंने जिस्ट में भी पढ़ा भाई, तुम जो कल वो है ना, जिसमें भी है। तो तुम्हारी क्लास सुनी थी, उसमें तुम बोल रहे थे ना कि 1 घंटा पेशेंट मान लो 1 महीने 1 ही साल में नहीं टॉलरेट करेगा इमैटिनिब, तो क्या करेंगे? पर 1 साल टॉलरेट नहीं करेगा इमैटिनिब तो उन पेशेंट्स को यही करेंगे, टेस्ट टेयर और ये सब। अच्छा, मुझे याद नहीं है, मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक, चलो बढ़िया, एटलीस्ट तो तुम कल जिस पढ़ाई थी ना तो याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये अगर लिवर के ऊपर ट्रीटमेंट का आ गया तो अलग से ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर ये लिख देना। पहला है सर्जरी अगर R0 पॉसिबल है बोथ प्राइमरी एंड लिवर दोनों के लिए। दूसरा है लोकल थेरेपी अगर R0 पॉसिबल नहीं है तो यू गिव लोकल अब्लेटिव थेरेपी टू रिड्यूस द ट्यूमर लोड। तीसरा है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में ये स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे डाला है, वो एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्राइटेरिया फॉर पेशेंट्स विद पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर विथ लिवर मेट्स। ये स्पेसिफिकली न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर विथ लिवर मेट्स के क्राइटेरिया है, क्योंकि ये अकेला कैंसर है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन है विथ मेटास्टेटिक सेटिंग। यस, सो या मिलान एंड यूनोस, ये यही दोनों अपने पास HCC के भी क्राइटेरिया लेके आते हैं, पर ये स्पेसिफिकली NET के। तो ये एक बार पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा आंसर बड़ा करने को। अभी ये मैंने दिशिता की स्लाइड से लिया था, मैंने अभी तक पढ़े नहीं है, बट ये उसने सिखाए थे, तो एक बार आई थिंक इसमें सब कवर हो ही चुका है जो अपन ने पढ़ा। ये बस उसने अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया था टू ये अपना टू अंडरस्टैंड नाइसली। ठीक है, फिर क्या आता है, क्या क्या बच गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिंग। हाँ, ये मैंने इससे डाला था मेनली ये बताने को। ये देखो, उसने वो पेट का उसने वही लिखा है जो अपन ने पढ़ लिया, तो ये उसमें भी लिख दिया उसने। ऑप्ट्राइड स्पेक्ट सिटी नहीं करना, स्पेक्ट सिटी इज सिंपली बेसिकली ऑप्ट्राइड स्कैनिंग, वो नहीं करना। उसके बदले आपको करना है सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर पेट सिटी विथ डोटाटेट, डोटाटॉक और डोटा और कॉपर डोटाटेट। तो गैलियम डोटाटेट, गैलियम डोटाटॉक और कॉपर डोटाटेट, ये आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं SSTR पेट सीटी। ठीक है, और दूसरा अपने करते हैं FDG पेट सीटी। ये कहाँ पे आ गया? फिर हाई ग्रेड NET और न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, यहाँ पे FDG पेट सीटी करना है। कंबाइनिंग भी करना है वो फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये 3 अपन ने कवर कर दिए हैं, वो कवर हो गया, इसी अपने को मैंने NCCN में आ गया इसलिए दिखाया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, पोटेंशियली करेक्टिव सर्जरी के बाद सर्वेलेंस, क्योंकि आप कोई एडजुवेंट नहीं दे रहे हो, रिमेंबर कोई एडजुवेंट नहीं दे रहे हो जब तक रिकरेंस नहीं होता, तो रेकमेंडेड फॉर एटलीस्ट 10 years फॉर मोस्ट पेशेंट्स।
सब ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया अपन ने। इसमें खाली इतना याद रखना, डिस्टल पैंक्रेएक्टोमी विथ और विदाउट स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। और स्प्लेनेक्टोमी किया तो ट्राइवेलेंट वैक्सीन देना है, न्यूमोकोकस, एचआईवी और मेनिंजोकोकल। तुम विदिन 2 वीक्स देते हो? मोर देन 90%। विदिन 2 वीक्स देते हो कि आफ्टर 2 वीक्स? विदिन 2 वीक्स ही देता है ना पोस्ट सर्जरी? हाँ, या तो लेस देन 2 वीक्स या पोस्ट ऑफ 2 वीक्स, ऐसा ही करते हैं यूजुअली। नहीं तो प्री ऑप नहीं, पोस्ट ऑप का ही पूछ रहे हो। पोस्ट ऑफ विदिन 2 वीक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। In cases of significant carcinoid heart disease, valve replacement should be done prior to liver resection if at all possible. And carcinoid heart disease है तो carcinoid syndrome भी होगा ही उसको। वो होगा तो अपन ने जैसे बोला ऑक्ट्राइड थेरेपी should be considered parenterally at induction of anesthesia prior to induction of anesthesia to avoid the carcinoid crisis. ये दो important pink में मैंने मार्क करे, वो important है। valve replacement also before surgery. मेन 1 में अलग से पढ़ाऊंगा, पर ये मुझे बताना था मेन 1 में मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रोनोमी। और ये मैंने सिर्फ पढ़ना हो तो ये 4 वो थे ना, मेन 1 ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, वीएच और एनएफ1 था। एनएफ1 कहाँ गया है? तो है तो कहाँ पर है? अभी तो दिखाया था तुमने। अच्छा, ये रहा एनएफ1 है। हाँ, तो मेन 1 एनएफ1, टीएससी और वीएचएल। और अपने क्या कहा था, एनईसी के अंदर 2 म्यूटेशन थे ना, P53 एंड RB1। और दोनों ही ग्रेड 3 के अंदर 3 थे। दोनों ही मेन ऑन्को सब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, P53 एंड RB, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ये मुझे बोलना था। टाटा की किताब में जो ऊपर मैंने देखा उसमें अपन ने ऐसा लिखा था कि एवेरोलाइमर्स यूजुअली तब देते हैं जब एसएसटीआर और सोमास्टेरॉइड एनालॉग्स या कीमोथेरेपी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद ही देते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि वेल डिफरेंशिएटेड ग्रेड 1 ग्रेड 2 एडवांस डिसीज, ठीक है। ये अपन ने जो सेकंड फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, फर्स्ट फ्लो चार्ट था लोकली रिसेक्टेबल है, सेकंड में क्या था, इवन इफ इट इज ग्रेड 1 ग्रेड 2 बट लोकली एडवांस्ड है, मेटास्टेटिक है, तो आप सर्जरी नहीं करोगे, तो आप सिस्टमिक थेरेपी दोगे। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, एडवांस्ड है या डिस्टेंट का है, तो उसमें प्रेफर्ड रेजिमेंट के अंदर देख लो सब सिस्टमिक आ गए, पीआरआरटी आ गया, एसएस एनालॉग आ गया, टारगेट थेरेपी आ गया और कीमोथेरेपी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। बाकी फॉलफॉक्स कैपॉक्स दे ही सकते हैं। अगर ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 के अंदर फेवरेबल बायोलॉजी मतलब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, मतलब अनफेवरेबल मतलब न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा है, उसके अंदर भी सेम चीज है। खाली ये ग्रेड 3 है, म्यूटेशनल बर्डन हाई है, तो पेम्प्रोलिज्यूमाब ऐड किया है वो लोग ने, प्रोवाइडेड एमएसआईएच है या ट्यूमर म्यूटेशनल बर्डन मेजर किया है। और एनईसी के अंदर तो ऑब्वियसली बात है जब हाई होने वाला है तो उसके अंदर भी दे सकते हैं। ये खाली याद रखना कि एनईटी और एनईसी के अंदर इतना ही फर्क है, ग्रेड 3 और एनईसी के अंदर इसमें ये ऐड हो जाता है, इसमें ये नहीं है, बाकी सब सेम है। ये पीआरआरटी कर दिया अपन ने, टेयर टेस्ट इसमें कुछ है नहीं। कार्सिनोइड सिंड्रोम इसके अंदर से मत पढ़ना, सेबिस्टन के पेजेस मैंने डाले हैं इसके अंदर, उसमें से पढ़ना, ठीक है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इंसुलिनोमा आप पढ़ सकते हैं अगर इंसुलिनोमा का अलग से सवाल आ गया तो। इसमें वो सेबिस्टन से मैंने बनाया था बहुत पहले, जिसमें सारे के सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब रिड्यूस करने, ये सब डीडी करने होते हैं आपको, और ये NIPHS एंड गैस्ट्रोनोमा का अलग से मैंने बना डाला है सब कुछ, क्योंकि ये भी सवाल आ सकता है। ये रहा हाइपरगैस्ट्रिनेमिया विद हाई गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट, उसमें तुम्हारा ZES है। हाइपरगैस्ट्रिनेमिया विद नो और लो गैस्ट्रिक एसिड के अंदर बाकी सारा है, PPI थेरेपी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थेरेपी, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्रोनोमा का ट्रीटमेंट, ग्लूकागोनोमा भी डाला है मैंने, तो ये 3 इसमें हो गए। ये मैं तुमको कल पढ़ा दूंगा। ये जेनेटिक्स है, सेबिस्टन से लिया है, और ये तुम्हारा कार्सिनोइड सिंड्रोम है, ये मैं कल पढ़ा दूंगा।